Okay, perfect. So thank you and welcome to all of you. As most of you know, my name is Aradhi Singh. I'm the part of industry since last 20 plus year. I started my career with the Indian Air Force as a rookie pilot. And after it, because of certain situation, I couldn't continue and join IT industry since last 20 plus year. I'm the part of industry. And this type of training and certification I'm providing since last 11 to 12 years. So far, I have delivered more than 80 batches. And today, we are not going to discuss about the technology. We are just going to discuss the journey of the professionals. In current situation, if I'm talking about the in India. In India, more than 1 crore people are working in IT industry, maybe directly or indirectly. They are working. And the problem is in IT industries, it's a white collar job. People are getting very good salary, but the question is everyone is getting good salary? Suppose someone was very good, academic wise, you are very good, but a person started in support program. And since last 15 year, 20 year, a person is working on support program and they're saying, okay, now in market for me, there's no opportunity available, or maybe I'm not getting growth, my salary is very less. So what happened? Out of 1 crore, in India, around 10 million people are working in IT industry, but everyone is not getting so great salary. So now question is why? Why you're not getting the good salary? And what you can do or what other members did to get a better opportunity. So, so guys, there are multiple reasons behind it. But what I'll do, I'll start from some of the candidate who are the part of last batches. Okay, so first I would like to invite Tripti Joshi. So guys, Tripti Joshi, I remember, I think she was the part of January 2024 batch. So in that batch, there were lots of people, but Tripti Joshi, Gaurav Kumar, uh, and uh, and one more person, Shobhit Sharma. Shobhit was from Uttarakhand and he was from MBA background. Shobhit was working in Patanjali. He was getting 15,000 rupees salary. She Tripti was working in Bihar. She was from Uttarakhand but working in Bihar. I'm not talking about the salary, but she was in bank. She was in bank working as a bank manager. And for other two guys, like one is Shubham Verma. He was from cybersecurity, and Gaurav Verma. So Gaurav Verma is fresher. Gaurav Verma last Tuesday, I think Monday or last Tuesday, he joined a organization. So let's start from Tripti. So Tripti, can you please just tell us something about your journey, overall industry, IT industry journey, and how exactly you started, what you were doing earlier, how you plan to start your career in IT industry, and how you learn whatever the different strategy you applied. Hi, good morning, everyone. Hi, I'm good morning. feeling good morning, Gaurav. I'm feeling honored to be here today to share my journey, how I transformed my career from a banker to a data engineer. So it's nearly a decade that I worked in banking sector, and it was a very stable environment. I learned a lot in banking. But as the years went by, I realized that I wanted more because I am from MCA background, but due to some personal reasons, personal choices, I joined the banking sector. But as the years went by, then I realized that I wanted more. It was fascinating for me that how data was shaping uh, decisions, how technology was evolving. So I was felt attracted towards the technology, but the shift was not very easy for me because I had no hands-on, or you can say no formal background in coding or in tech. But I started
with small tutorials, watching small videos. But what truly accelerated my journey was founding a mentor like Aradhya Singh. He is the one who not only guided me technically, but also believed in me when I doubted myself. He helped me to understand that my banking experience was not a limitation, because at some time I felt that uh, this is my career and I have to be continued with this career. But when I met Aradhya, then he helped me understand that business logic, what the challenges are there, and how can I uh, cope up with these challenges. I just needed the technical layer on the top, what skills I had developed in my banking environment. So Aradhya was always there as a mentor, and he shaped my career in the best way that he can, with all the efforts, uh, mock interviews, that real world experience, what I got in my past experience. I Now I'm proudly I can say that I'm working as a data engineer, solving real life problems and learning day by day. And the good part is, the very, funny part is what happened. She started her journey with the Cloud Master program. I said, okay, do one thing. After this program, there'll be chances that you'll get opportunity at a visualization side, data side, administration side, IoT side, or maybe some other areas. You know, the region is master program means this is one of the bundle. In this bundle, there'll be there'll be chances that you will get opportunity to learn 30 to 40 services. If I'm talking about the visualization, for visualization, people are learning one or two tools. If I'm talking about the data side, people are learning data factory and data break. Only two. But I said, okay, what you can do, you are going to start your career. So don't think that you are going to start from the top. Just try to start from the beginning. In that case, master program will help you a lot. The reason is, suppose you're planning to work as a Power BI developer, okay, you can, but just a shortcut. It's just like the trick, just like the Maggie. Means just learn for 15 days and get opportunity. But the thing is, will you be able to survive on the basis of SQL Server only, or Python only, or any particular one technology? Answer is no. For any candidate who is planning to start the career in IT or in cloud computing for on the basis of one technology or on the basis of skill set, it's very difficult to survive for the long time in a market. That's why I decided, even I said, okay, do one thing, just go with the master program. The reason is master program is or Azure cloud computing is just like the book. Suppose you have a book where you have hundreds of chapters. So what you can do, first finish all the chapters, or maybe you have total 50 chapters. Just finish all the 50 chapter. So what will happen? You'll get idea of infrastructure, you'll get the idea of platform, you'll get the idea of SaaS. On the basis of this, in case you're applying to get opportunity, you can target. Otherwise, in case you want to do specialization, so what you can do, you can move toward the data side. So what she did, even I completed her master program, as well as I was the person who completed the SQL and Power BI training also. Means end-to-end training was provided by me. For me, it took around 6 months. Correct, Tripti? First three Yes, months, she was the part of master program, then after the data program. So I completed end-to-end, uh, you know, program. These two program I completed, and the good part is she was very much dedicated. I think almost every day, minimum one time she was calling, minimum one and maximum two time. Morning, I think it was 8:30 or 9 o'clock. Evening, somewhere around 6 or 7 p.m. So, and she was doing whatever I was covering during the live sessions, she was practically implementing. Wherever she was struggling, either she was calling me or she was calling to someone else in the team member. So this is called the dedication. Lots of people, what they are doing, they are just joining the session. They are not even discussing. They are not, you know,
practically implementing. So attending the session is not only one thing which is required. In case you want to transform your career, you should be vocal. You should ask the question. You should be punctual in the session. Plus, if possible, then play the recording and watch one more time. And it's a mandatory to practically implement everything. The reason is industry is not looking for the theory. In real time situation, whenever you guys will go for the opportunity, industry will ask for the practical exposure, whatever the different exposure you have. And in current situation, the good part is C is so now. Okay, so how many members are working with you overall, Tripti? Uh, 20 to 25? 20 to 25 people are working with Tripti, and I think your total IT experience is 7 months, right? Yes. And what you feel, a person who is having 15 years of experience, and if you're going to compare with you, where you feel, where exactly you stands? So initially, I had a fear in my mind that I am not from IT background. Do I match up with their technology, or do I lack somewhere, or where will I stand? So I have that fear in my mind. But after 6 7 months, I can proudly say that whatever queries, whatever code, whatever technology they are working on, so I am also giving my 100%, and whatever they all can do, I also can do. So So you are similar like them, or you are better, or them better than them? yeah, I can say that. Initially, Yes. I had a fear. Yeah, truly Yeah. speaking, initially I had a fear because I am not from that background. But that time, no one can say in my team that I am not from IT background. And personally, I also don't feel that. So guys, in beginning, I remember when the very first time she called me, she asked one question. She said, "Okay, I'm a banker working as a bank manager since last 8 years. Is it possible for me to start the career in IT?" I said yes and no. Yes, you can. And whatever the salary you want to target, you can. And you will get it. If you have the knowledge, whatever I'm telling you, if you're going to follow, definitely you'll get it. Even whatever the salary, she is getting very good salary. I'll not give the number, but whatever the salary she is getting very good salary. Even उस टाइम अगर उसका 50% ज्यादा भी बोला होता, 4 5 6 8 lakhs बोला होता तो भी मिल जाता. The reason I said, okay, you don't need to demand 30 lakh or 40 lakh. Do one thing, just demand average number, like somewhere between 15 to 20 lakh demand, and you will get it. And this is the learning period. For her, this is just a learning period. And frankly speaking, why she is able to survive in industry, the reason is her knowledge is diversified. The reason is she's dedicated. The reason is she was very much punctual in the session. And another reason is she was practically implementing. So if anyone, doesn't matter what is your background, maybe you are from MBA, you are maybe HR, maybe you're from non-IT background or IT background. Maybe you're from support, you're working as a support engineer, infrastructure engineer, cyber security, developer, data engineer, SQL, PSQL, MySQL, Oracle, or anything else. If your knowledge is diversified, if you are dedicated, if you are committed, so it will take maximum 9 months. Why I'm telling maximum 9 month reason is during the winters, usually you'll feel there'll be very less number of calls. Minimum, it will take 3 months for you to prepare. Okay. If you're planning to go for the two different courses, then it will take 6 months. So, and overall, it will take max to max 9 months. Within 9 months, if you have very bad luck, then it may take 1 year. Otherwise, within 9 months, maybe 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, or max to max 9 months, you will get opportunity. The salary structure is very high, but only for the candidate who is, if your knowledge is diversified. So in Azure cloud computing, total how many services you can work on, Tripti, in term situation, or whatever the different services you learn? Do you remember any is it number, lump sum number? 30, 35, or maybe more than that? Yeah, I learned 30 to 40, I think. But currently I'm working on, I think, 10 to 15. Correct. So guys, this is the reason. Even that's why I'm saying, guys, don't strict yourself on one technology. Suppose you're saying, okay, I'm good, I'm much comfortable with SQL Server or Power BI. Power BI or SQL is just like the Maggie or noodle.
You no need to spend lots of time. Even with the less effort, less time, you can quickly get opportunity. But the question is, will you be able to survive for the long time? What will be the salary? Do you think you will get opportunity to grow? Answer is very limited number of opportunity. I mean, opportunity to grow. Salary structure, there's a there's a threshold value for these two technologies. Similarly, if anyone who's planning for the data engineering, you should plan, but not directly. Most of the people, what they are doing, they are directly using the parachute to launch. They are starting their career with a data engineer. And this is a region in data engineering, you'll get huge number of opportunity in the market. But the problem is people are unable to survive themselves. Region is they don't know anything. They're just learning two technology, data factory and data brick. On the basis of these two technology, they want to survive in the market. And in most of the cases, in 90 to 95% cases, the duration of the data engineering project is somewhere between 3 to 6 months only. Means every year you have to move in at least minimum two projects, minimum 2 to 3 projects, and everywhere you have to prove yourself. You can prove yourself if your knowledge is diversified. If you have learned multiple services, then only you can prove yourself. So, guys, this was my suggestion to Tripti. I remember, I think it was the December last week or January first week. That time the Yes, batch was already started, and she started. Even that time, I remember I said, yes, it is possible. You can do it. But if you are consistent, if you're focusing, if you're asking the question, then only you'll be able to do it. Now, I'm saying yes, she is one of the candidate who are very much dedicated. She focused, and in delivery also, she is one of the best candidate. The region had diversified knowledge. If you give the opportunity to work on any Azure services, any cloud services, you can. If a person who is working on the Power BI, SQL, or Data Factory or Databricks, if you tell them to do something else apart from these 3 to 4 services, they can't do it. Even the problem is 99% data engineers are unable to write the complex logic. Not even modern type of logic they cannot write. The reason they are not diversified. They have very bad logical skill. They can write select, insert, update, and delete. So industry is not looking for the such type of professional who can write the select, insert, update, and delete only. Industry is looking for the people, a professional. If your knowledge is diversified, if you have the control on multiple services, you'll be always in demand. So another question. So any comment or okay, so Tripti, what was your first interview? Can you and how exactly it was? I remember I think it was Accenture or yes, Accenture. Accenture. So when you attempt for the interview, how was the feedback? Means that time what you were thinking? You were close, very close, or it's a very bad? In my mind, yes, I was close, but the result was not in favor of me. Correct. So after that, I thought, yes, I need to upgrade my knowledge. I need to enhance the technology. Uh, yeah, I only know, I can say that bookish language, or I only know the, you can say, only 2 3 lines. I can answer that time only 2 3 lines about any technology or any question. So because I don't have the working experience, so after that interview, I uh, upgrade myself. I upgraded my answers in interviews, that with examples, how I have to elaborate my answers. So that was the first interview. But after giving that interview, I was confident that yes, Right. I So will be guys, successful. one thing I tell you, I remember that time she was giving the response of all the question, but 1 or 2 line only. 1 or 2 line, yeah. She was completing everything in 2 line. Yes. Another reason is she's from Uttarakhand, but working Bihar since last 8 to 9 years. She was in rural area or somewhere in Bihar. It was Grameen Bank. तो English तो भूल जाओ. When she started, for her it was totally new. Means English भी सीखना था साथ में. English भी English, सीखना था. English, Signata, I did not about the teams, how to connect in teams, how to operate. I did not even know
all about. I did not about the culture. It was very new for me. Everything was very new for me. Yeah. So guys, this is called the dedication. That's why if you remember in last session, I told you guys, it doesn't matter what is your background. The matter is, are you dedicated? Are you committed? Are you in communication? Usually I'm saying, guys, if you have any question, call me. You don't need to wait. You have my mobile number, call me directly. Monday to Friday, usually morning, 7:30 to 11 o'clock, I'm available. Or you can ping me. You can call me. If I'm not receiving the call, it means somewhere I'm busy in a meeting. Whenever I'll get free, I'll call you. So if you are in a communication with me, the chances will be very high. Even if 100 candidates are getting registered for any of the course, my courses, success rate is around 80+%. It means if you are punctual, the chances will be 90 to 95%. If you're not punctual, if you have completed 70, 80%, still there will be huge chances that you'll get opportunity. Even lots of people who are watching the recording only, they're also getting opportunity, but chances will be lower. Overall, it's a 80+%. So this is one case study. And today, see, since last 15 to 20 minutes, she's speaking. I remember 1 year ago or 1.5 year ago, she was unable to speak even for 1 minute. Max to max 30 seconds he will speak, उसके बाद चुप हो जाएगी. But now she's doing so great. Even Teams में I think MS Office वगैरह भी यहीं start किया है. She was from IT background, means she completed her MCA, but just कुछ याद भी नहीं था कि क्या पढ़ा था उस टाइम पे. In Everything 2000, started from here. after before 12 or 13 years ago, I completed my MCA. Yeah. So, So so one more thing. Don't lots of people are calling. They're saying, "Hey, I'm 40-year-old. I'm 25, 35, or I'm fresh." And doesn't matter. If you only one thing will matter, your knowledge. If your knowledge is diversified, if you're dedicated, committed, then you'll get opportunity. If maybe you're fresher, you don't have the knowledge. You're very young, you don't have knowledge. You're very smart, but you don't have the knowledge. Companies will not give you the opportunity on the basis of your face, on the basis of your region, color, or something else. Companies will give opportunity on the basis of your knowledge. So, so I'll take other questions. So in the meantime, we have another candidate named is Gaurav Verma. Gaurav, are you there? Yes, sir. I'm here. So, guys, this is new case study. Gaurav is also from Uttarakhand, and these people are from mostly are from non-IT background, and they are working in cloud computing. So they are cloud professionals. And what happened? They can, I mean, they cannot. I will not say they can work like the cloud admin. In case Tripti is getting opportunity to work as an architect after 2, 3, or 4 years, she can try for the architect. Means for to appear as an architect, whatever the knowledge is required, she already have, and she already working. After sometimes she can try. She can try for the architect, and salary structure for the architect, maybe data architect, solution architect, or enterprise architect is very high. So Gaurav case is it was totally different. He is not from IT background. Even Tripti was MCA. And Gaurav, can you please tell us something about yourself? Yes, 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 yes. So, hello everyone. My name is Gaurav, and I'm really very grateful to be here to sharing my journey, a successful journey. So, basically, I am from non-IT background, and to from non-IT background and to getting multiple job offers in IT industry. So, yes, I have just completed my MSc in chemistry. Okay, like many fresher graduates, I immediately started searching for a job. Okay, so I got an opportunity, and I worked as a senior scientist at Patanjali Research Institute, where I was paid hardly amount 15,000 per month. So yeah, it was a good learning for me. But after working for 5 to 6 months there, so I think I realized that there is no growth. So growth was limited there, and the work didn't go well from my side. So from that, I started something more to can which can secure your career and for better growth, and challenges should be there, and financial stability, one of the main point for me, should be there for that. Okay, so when my brother told me that Aradhya sir have a Azure master program, they are delivering the sessions. Okay, and after that, I have just joined in. I think I have joined in April 2024 batch, right, sir? I was the part of your Azure master program in April 2024. Actually, these three were the part of same batch. But what happened? They were enrolled for the multiple courses, Yes, so yes, it yes. was for 6 months.
So at that first time, that was not easy for me. So coming from non-technical background, so many topics in his classes were very new to me or completely new for me. So the Aradhya sir explains very good step by steps, giving hands-on experience on that, and they also used to give lots of assignments that really helped me a lot. Okay, and also I have put my effort into that. So completing assignments multiple times, practicing daily for that, and of course I have used ChatGPT to you can say understand real time scenarios based question, which generally they ask in interviews. They don't ask direct question, mostly they interviews they will ask real time scenario questions. Okay, from there I felt very the time comes where I felt very discouraged or very confused. I am doubting myself that I can do this or not, where I am coming from non-IT background. Okay. Then Aradhya sir came in picture, and Aradhya sir also motivates me. Okay. And his words, his energy, so they keep me on going. So I think he was remembered me to the success that time. So that consistency, his consistency and my consistency, that brings the result for that. So when I started giving the interviews, first 2 3 interviews that didn't go well. So that are my warm-up interviews. I write down all the questions they ask in the interviews, and I'm writing them. I'm do the practicing, and the finally time came that I cracked my first interview. At that moment, that changed my whole path, or you can say, and it also boosts my confidence level as that. So back to back, I got three offers. One is 13.5, one is 16 LPA, and what is 18 LPA. I got the offers from back to back from the company. So yes, from earning 15,000 as a junior scientist and to having a offers worth like lakhs per annum. So that's a huge transformation for me. And if I do the message for everyone, first you have to your background doesn't matter for that. If you are coming from IT or non-IT background, that doesn't matter. If you are doing the efforts for the something or what you are doing, if you are putting the effort for that, you can go for that. And you have to do the practice, you have to do regular practice, you have to take your assignments which Aradhya sir used to give. They used to give some of the assignments of their classes. You have to do at least 2 3 times a day. Okay. And you can use chat gpt as well. Yeah, and you can go for Google for your scenario based question. You can practice from there. And most important, first you have to never give up attitude, you have to be there. Okay. If you are failing, you have to never give up. So at last, I want to give a huge thanks to Aradhya sir. His teaching, his support, his motivations, that truly changed my life, and I will proud to be a part of his journey. So Thank you, sir. one more part, guys. I remember, I know Gaurav since last 1.5 year. How I know Gaurav and Subham here in this, group. We have two candidates, Gaurav Verma and Subha Verma. They are brothers. Subha Verma is in communication since very long time, and usually he was traveling from Uttarakhand to Noida location. He was in communication. Personally, he was meeting after few months. So Gaurav, Gaurav was working in Patanjali. He was getting only 15,000 rupees salary, I remember. And अपने भाई शुभम को देख के उसको लगा कि if शुभम can do it, then why not I should do it. मैंने बोला एक काम करो, do one thing. You are not from IT background, तो you can go for इग्नू से enroll कर जाओ and just go for the MCA. Finally उसको चलने दो. And in meantime, just gain the knowledge. The reason, if you have 10 degrees, 20 degrees, you don't have knowledge, no one is giving you value. You will not get anything. But if you have the knowledge, even if you don't have any degree, still there's a chances that you will get opportunity. So he was very much dedicated, very much committed. Even there was good and bad time. He was struggling. They say there was chances that he will get opportunity in last December, January, man. But usually in India, November, December, January, and February. During this period, you'll get very limited number of opportunity. I said, okay, don't worry. After February, there'll be huge chances that you'll get opportunity. And now he has multiple opportunity in hand. Even Akriti, if you remember yesterday, I was talking about one of the opportunity. It was shared by Gaurav. So the thing is, a person who is dedicated, doesn't matter from which background you are. Maybe you're from arts background. Even we have another candidate who's from United States. It's a very late night in US, and she's from BA. She's BA.
See, from arts background, still, I mean, this her batch just completed, but I can give you writing eyes that in next 3 to 4 months, she will get opportunity. So in beginning, I was saying if you are from and lots of people in industry, I said around 1 crore people are working in IT industry, but everyone is not getting very good salary. Even Gaurav just started, I think Tuesday he started his career in IT, and whatever the salary he's getting, lots of even 80% people who are working in IT industry, they are not getting that amount of money. Since last 15 year, 18 year, 20 year, people are working. Even just last week, I got a call from one of the senior manager who is working at SCL Technology Limited. He said, my experience is 16.5 and I'm getting salary 19 lakhs only. I'm working as a bank. I'm working as a manager, senior manager, not manager, senior manager. So, and what salary Gaurav is getting? Same salary what salary she is getting. So it means if you are working support program, you are working on Power BI, you are working on any other tools and technology, maybe SCCM, you are working as a developer, you are working as a data engineer. If your knowledge is diversified, there'll be huge chances that in going forward in next few months, you will get opportunity. Industry is giving the preference to the candidate who are multi-skill. For example, suppose you're working as a you're working as a SQL means there's an opening for the SQL developer or Power BI developer. But if you're proving that you can work as a cloud engineer, you can work as a data engineer, you can work as a visualization engineer. So in this case, there'll be huge chances that you'll get the preference or you'll get the opportunity. The reason is maybe for the time being, company is going to hire you for the visualization, but after 3 months, they may use you as a cloud engineer or they may use as a data engineer. So diversified knowledge is mandatory, guys, in case you want to sustain yourself industry for the long time or you applying to get opportunity. So there's a question from Shardul. Yes, Shardul. You can unmute and ask your question. Hello, sir. Am I audible? Yeah, I can. Yeah. So my query was to Gaurav that how much experience he had put at that time. I just wanted to uh, uh, inquire about that thing. I'm audible. Hello. Yes, you're audible, Gaurav. Yes, I just put 2 years of experience. Okay. So, so So, guys, yeah, if did you you face start. any difficulties and this much experience, or you had to wait a long time Yes, for yes, getting interview yes. call? I have given around 50 to 60 interviews from the starting to end. So starting interviews are not going well. Then I used to write the questions they ask in interviews. I write down all the possible questions. Then I do chat GPT. I prepare from there. Then slowly, I get the chance. Then I get the know things very well. So at last, in my few days, I have just cracked 2, 3 interviews, so and get the offer back to back. So one common thing I tell you guys, or is, Gaurav, Shubham, Sobhit, Tripti, all these were the part of same batch. And mostly they were from different background. I remember, Tripti, I think for you to you cracked this interview in third or fourth one. I think it was third company or fourth company. She cleared it, right, Tripti? Yeah, third. Third one. Okay. And I was 100% sure that Gaurav will be one of the first person who will get opportunity. But he was unlucky. He was the last person who got opportunity in the batch. मेरे हिसाब से he was one of the best candidate. इससे अच्छा कोई था ही नहीं. But the problem was luck. Sometimes luck also matters. Okay, so मैं हमेशा बोलता था guys don't worry. Maybe you're struggling. It's a bad time for you, but just keep focusing. Try your best from your side. The time will be back. Okay, you no need to give up. Just keep trying, and keep trying. Even there's another candidate name was Sobhi Sharma. He was also from Uttarakhand. So, and he was from MBA, I think HR, MBA in HR or MBA in finance. And he was average or below average, I would say below average. I think in sixth or seventh company, he got opportunity. Means a person, I thought that he will get opportunity in last. He got opportunity very quickly. And a person like Gaurav, I thought he will be one of the first person who will get the opportunity. He got the opportunity in last. Another thing is
कि गौरव का प्रिपरेशन जिस तरीके से है, द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, किसी को भी डाउट होगा कि ये कहीं से देख के बोल रहा है। एंड दिस वॉज द रीजन, इवन इंटरव्यूअर भी बोलते थे गौरव को कि तुम कहीं से चीटिंग कर रहे हो, कहीं से तुम देख के बोल रहे हो। द रीजन, द वे ही वॉज प्रिपेयर्ड, लगता था, मुझे खुद लगता था सम टाइम ड्यूरिंग द सेशन, जब मॉकअप इंटरव्यू अगर मैं ले रहा होता तो then मैं पूछता था कि काम करो, जस्ट शेयर योर स्क्रीन, जस्ट शेयर योर वीडियो एंड स्क्रीन भी शेयर करो। एंड देन आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन स्पेशली गौरव से, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी वाज वेरी हाई, 100%। मुझे खुद डाउट होता था कि इतना क्लियर रिस्पॉन्स मैं नहीं दे सकता। तो इट वाज अ मेजर रीजन। इवन आई रिमेम्बर मैंने गौरव का खुद रेफर किया था दो जगह पे। एक जगह पे विदाउट इंटरव्यू लास्ट राउंड में पहुंच गया गौरव, इट वाज एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वहां पे इंटरव्यू ने बोला था, क्या बोला था इंटरव्यू ने? इंटरव्यू ने बोला था सर कि इतना परफेक्शन के साथ कौन दे सकता है इंटरव्यू, तो कोई उन्होंने दे ही नहीं रिकमेंड सकता। करके। एंड ही द वाज माय, क्लाइंट, सर क्लाइंट ने बोली थी ये बात। क्लाइंट ने बोला था, अ पर्सन एंड जिसको दे आर मैं फ्रॉम रेफर किया यूएस। था, ही वाज वर्किंग एज अ सीनियर जीएम इन यूनाइटेड स्टेट। उसने बोला था, आई हैव टू मोर देन 200 अपॉर्चुनिटी इन माय टीम। तो आपका स्टूडेंट्स है तो ओके, मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा, आई सेलेक्ट डायरेक्टली। एससीएल से इंडिया से ही सिलेक्टेड। बट जब क्लाइंट ने इंटरव्यू लिया तो ड्यूरिंग दैट पीरियड क्लाइंट ने बोला कि इतना परफेक्शन किसी का हो ही नहीं सकता, पक्का ये कहीं से देख के बोल रहा है। एंड दिस वाज वन केस। सेकंड केस आई रिफर्ड वन मोर प्लेस, जहाँ पे मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि इस बंदे के साथ ये, आई एम नॉट श्योर कि ये गुड और बैड है, बट परफेक्शन उसका कुछ ज़्यादा ही है। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोला था। एंड देयर वर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे गौरव के इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनिशियली ही वाज सेइंग ही इज फ्रेशर, ही वाज फ्रेशर, तो वहाँ पे होने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। सो आई सेड ओके, डू वन थिंग, अब आप यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस शो करना स्टार्ट करो, जस्ट जस्ट शो देम दैट यू आर वर्किंग सिंस लास्ट 2 ईयर। And don't try for the very big organization. Just try for the medium type of organization. Just work for 1 year, 2 year, and after it, black का white हो जाएगा. Then after it, whatever wherever you want, you can try. You can try wherever you want. So the thing is the strategy. There must be some strategy. The reason is in lots of cases, maybe there'll be chances that you will not get even call. In that case, you have to change your strategy. You have to be in communication with me. For example, आज तक जितने भी कैंडिडेट ने मेरे कम्युनिकेशन में रहे हैं, कोई ऐसा एक भी केस नहीं है जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो। इफ एनीवन हु इज नॉट कम्युनिकेटिंग, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे भी नहीं पता हो कि वे एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग, वेदर यू आर ट्राइंग और यू आर नॉट ट्राइंग, आई डोंट नो। Still, people are getting opportunity, but if anyone who is in a communication with me, maybe it will take time, 3 months, 4 months, 9 months, or 1 year, but the chances will be 100% that you'll get opportunity. The region where you're getting failed, I tell you, I'll reshape where exactly you are lacking. So here communication is very important. And the use story I tell you, 11 or 12 year ago when I started my first batch, उसमें उस टाइम में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 99.99% केसेस, सभी इनफैक्ट मैं बोलूँगा 100% कैंडिडेट फ्रॉम हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई। एंड उनका सक्सेस रेट 100% होता था। द रीजन मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द सेम ग्रुप। फॉर एग्जांपल, टीसीएस से 15 बंदे आए एंड ऑल द 50 मेंबर्स आर वर्किंग टीसीएस। तो उससे क्या होता था, ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस दे वर इन कम्युनिकेशन। इंटरनली वो मुझसे बातें नहीं करते थे, बट इंटरनली दे आर कम्युनिकेटिंग। सब सपोज आई एम स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश and they are from Tamil Nadu. So they are not comfortable. They are not comfortable in Hindi. So, but they are comfortable internally. Internally inside the team, they are very much comfortable. If anyone who is from Telangana, Telugu speaking है, तो Telugu speaking को आपस में काफी communicate करते हैं। तो whenever you are joining with your friends, colleague, family members like husband and wife, ऐसा भी होता है कि brothers like here Shubham and Gaurav Verma, Shubham Verma, Gaurav Verma, both are brothers। सी दोनों सिस्टर ज्वाइन करती हैं या कलीग्स ज्वाइन करते हैं, फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं। तो इन दिस केस में क्या होता है कि दे आर इंटरनली डिस्कसिंग, एंड इफ यू आर डिस्कसिंग more, there'll be huge chances that you'll get opportunity very quickly. If you're not discussing, if you're just attending session, you're not discussing, you're not practically implementing, you're not doing anything, तो आपको टाइम लगेगा, it will take too much time. Now, so guys, if anyone have any question from Gaurav or Tipti, you can. If no, then I'll start the third use case, who is Shubham Verma. Shubham Verma की story एकदम अलग है. Hi, Aradhya sir. I have one quick question. Just wanted to get clarity. Like, whomsoever these folks have attended your program, given that they don't have IT background,
So post taking course from you, they showcase their entire past experience as an cloud professional, right? Is this the strategy? Okay, so Tripti, the case of Tripti was very different. I said, okay, you are the part of organization, you are the part of banking sector since last 9 year. आप Mhm. अपनी बैंक को दिखाओ दिखाओ कि I'm working as a bank manager. करेक्ट Mhm. तृप्ति आपने यही दिखाया है यू आर वर्किंग एज Yeah, बैंक correct. मैनेजर उसने कोई चेंजेस नहीं किया नथिंग Even बट even in my last round of interview, he discussed with me all about the loans, all about the deposits, how we are giving loans to customers. All these things he had discussed with me in the interview. तो व्हाई ही वर डिस्कसिंग द रीजन बिहाइंड इट गाइस डोंट थिंक मैंने 9 ईयर बर्बाद कर दिया 8 ईयर बर्बाद कर दिया यू आर नॉट यू हैव इन्वेस्टेड एनीथिंग if you have the knowledge, this knowledge is knowledge. It's not wastage. It will come. So why he was why into asking all these questions related to banking and finance? The reason he was thinking that he will use Tripti in functional area also as a functional consultant. That's why he was asking the domain related question. So if anyone who is the part of BPO, anyone who is the part of maybe L1, L2 or L3 support program, maybe you're working as a data engineer, you're working as a Power BI engineer, that's okay. For example, in my case, if you ask me, I have worked on more than 44 technology, .NET, Java, PHP, Python, AngularJS, Node.js, SQL, PSQL, MySQL, Oracle, more than 60 to 70 cloud services, multiple cloud, on-premise services, cloud services, open source, Impala, this, that. I know I have worked on lots of technologies. So I'm getting advantage. Reason is if you are working as a data engineer, I'm heading the data engineering team, but I mean solutioning and data engineering, solutioning administration and data engineering. So if you write 100 line of code in a day, or maybe 500 line of code, so I can write 5 million lines of code in a day. अब सुन के लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, right? So the thing is, I'm not writing the code. I'm developing the tool, and these tools are writing the code. Again, repeating, guys, I'm from software engineering background. Like 15 year, I was working as a hardcore software developer. Okay. Then after it, development and administration. Then development, administration, architecting, and data. So since last 4 years, I'm in data side. But my knowledge is very much diversified. I can write the code in .NET, PHP, Python, PowerShell, or open source or any other technology. Same time, I'm heading the data part. So here I'm not writing the code. But the thing is, whenever the situation will be worst, then I will write the tool. Means I will write the tool, and these tools will write the code on behalf of me. So if you write one line of code, in the meantime, same time, I will write at least 10,000 line of code. The reason I'm not writing the code, I'm just writing the code and tools, and these tools are writing the code on behalf of me. So guys, you can automate, you can move toward the automation, you can automate things if your knowledge is diversified. In data engineering, you will not get even 0.001% people who can automate. The reason they are just focusing the select, insert, update, and delete. That's why they are struggling. So yes, any other questions, Sachin? Sir, I got some the point you were trying to tell, but मेरा थोड़ा सा अलग था. मैं ये पूछना चाह रहा था. Let's suppose I'm working in a SaaS technology, SaaS डेटा फील्ड में है, 10 साल से काम कर रहा हूँ. That's fine. अभी मुझे चेंज करना है एज्योर में आना है, गिवन दैट आई एम ऑब्जर्विंग कि SaaS की मार्केट डाउन होते जा रही है डे बाय डे. Yeah. सिर्फ बैंक से यूज कर रहे हैं. Yeah. तो ऑलरेडी मैं 10 years का एक्सपीरियंस पे हूँ, एक अच्छे पैकेज पे हूँ. लेट्स सपोज आई वांट टू जंप इनटू द रेंज ऑफ 30-40 लाख, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे हूँ. तो अभी फिर मुझे एक तरीके का एक फैब्रिकेट स्टोरी बतानी पड़ेगी दैट आई हैव अ 2-3 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी इन द मार्केट ऑन एज्योर और क्लाउड प्रोफेशनल क्लाउड वर्क प्रोजेक्ट्स. तो वो कैन आई फ्रेम दैट पिक्चर आफ्टर दिस Yes. कोर्स, वो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी आ जाएगी? Yes. वही मेरा क्वेश्चन था. Yes. So Tripti was saying, I remember he was saying that since last couple of days, he said, okay, I'm working in a bank since last 8 to 9 years, but since last 2-3 years, I'm working in cloud computing. Even that time, कुछ question भी पूछे गए, बैंक में cloud का क्या काम होता है? He was posted in Yeah, Bihar.
मैंने बोला कि डोंट टेल Data कि center. Yeah, I tell मैंने that बोला I was working in data center of the bank. डेटा सेंटर। सो आई सेड ओके, सब कुछ ऐसे ही रहने दो, बस ये मत बोलना कि ब्रांच में हो, ब्रांच मैनेजर हो, बोलना बस कि आई एम हाँ, वर्किंग इन डेटा सेंटर सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। वही वही चीज था माइंड में कि भाई मैं भी ऐसे ही कहूंगा, मैं 2 साल से क्लाउड के प्रोजेक्ट पे था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में था, या और देन आई प्रिपेयर द स्टोरी कि वो Correct. सेम काम एंड The करूंगा only लेकिन only thing is that you just have to prove yourself that you are working as a 2 years of experience. That's it. तो सेम सिचुएशन अनदर गौरव थैंक इज यू। फ्रेशर, ही इज कंप्लीटली फ्रेशर, मतलब पहली बार पहली जॉब है, मतलब वो पतंजलि की जॉब छोड़ दूं, ही वाज गेटिंग 15,000, तो दिस इज द फर्स्ट जॉब फॉर द गौरव। Yes, sir, first job. Gaurav, Gaurav said, okay, I'm the part of industry since last 2 years, and since day one, I'm working in cloud computing. You have to build that confidence level So he for will that. get opportunities. I mean, I think 4 days back he joined. I think last Tuesday he joined. Yes, sir. So what will happen? He will work as a cloud engineer. He will work as a data engineer. Power BI पे भी काम करे, जो पढ़ा है सब पे काम करेगा वो. The reason his knowledge is diversified. ओके, एंड इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन, अभी वो बातें ऐसे करेगा कि लगेगा कि पक्का कहीं चीटिंग करके बता रहा है वो। द रीजन, उसने सब कुछ इतनी ज्यादा प्रैक्टिस किया कि मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि यार गौरव ही बोल रहा है या कहीं से चीटिंग कर रहा है, वो सर ऐसा आपकी होता जो था। क्लासेस थी वो मैंने मतलब क्या बताऊं, मैं 5-6 बार इवन इवन मैं गौरव से बोलती थी कि तुमने तो घोल के पी ली है क्लासेस। तो सो गाइस, ही वाज, मतलब गौरव क्या कर रहा होता आज, अगर गौरव यहाँ पे न होता तो मैं कई बार गौरव बोलता तुम ऑटो चला रहे होते उत्तराखंड में, बिल्कुल सर चला रहा ऑटो होता। चला रहा होता, अदरवाइज क्या करता, सोचो एक सेकंड के लिए। सो आई सेड डू वन थिंग, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। सर एमएससी कर रखी है केमिस्ट्री में, कुछ तो करता हाँ, है, इंजीनियर ये साइंटिस्ट तो बना ही नहीं, हुआ था ये। फिफ्टीन जूनियर थाउजेंड साइंटिस्ट। 15,000, अब 15 से 20 पहुंचने में उसको 10 ईयर लग जाते हैं। भाई जो जो काम कराते थे ना पतंजलि में, मेरे से मशीनें साफ करवाई हैं उन्होंने उधर। लो बताओ, डेटा इनिशियली साइंटिस्ट इनिशियली मशीन करवा साहब, दी होगी सर, अभी बाद में तो आज वो रामदेव वो डाल रहा, सबसे बड़ा नहीं फूड कुछ पार्क नहीं, बना नहीं दिया है इसने। मिलता, नहीं मिलता। इवन इफ यू वेजिटेबल सेलर, यू कैन मेक मोर मनी। करेक्ट। राइट राइट राइट। प्रोफेशनल्स की रिस्पेक्ट, इफ यू आर वेरी गुड ग्रूम्ड, अच्छी जगह पे हो, देन यूल गेट द वैल्यू, अदरवाइज प्रोफेशनल्स की वैल्यू कंपनियां नहीं करती, स्पेशली पतंजलि या देसी कंपनियां तो एकदम नहीं करेंगी। इवन गौरव के साथ में एक और गौरव का फ्रेंड था, हुआ द आल्सो पार्ट ऑफ द सेम बैच। उससे तो एचआर मारपीट करने आ जाता था, वो भी मशीन साफ करता था एमबीए करने के बाद में, एचआर से, एचआर या फाइनेंस से करने के बाद में। So the thing is, why I'm telling, don't think that I'm from this background or I'm from that background. If you're focused, if you're dedicated, if you're committed, if you're punctual in the classes, and if your knowledge is diversified, आपको job मिलनी ही मिलनी है। और if anyone who is working, who is struggling, maybe अच्छी salary नहीं है या career growth नहीं है, for example, SAS, or another example is SharePoint. SharePoint or SAS, these are the almost dead technologies. SCCM, VMware, ठीक है, दीज आर ऑल डेड टेक्नोलॉजी, गया टाइम जा रहा है इन सब का। सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन शेयर पॉइंट, क्या करेंगे आप सोचो, जस्ट थिंक फॉर मिनट। अब जाके गांव में खेती करेंगे और पान की दुकान खोलेंगे। So guys, for them, for anyone who is working on any odd technology or outdated technology, market के अंदर there is no demand available for such type of technology. So usually I suggest everyone to move toward the upcoming technology जो market में trend में चल रहे हैं. It may take some time, maybe 3 months, 6 months, 9 months, but the thing is you will be diversified, your knowledge will be diversified, you'll get better control on the services, and chances will be very high कि आपको opportunity मिलेगा, and that time you can show that I'm working. You don't need to tell that I'm the part of industry since last 15 year, और अभी किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। So you can tell them, okay, I'm the part of industry since last 15 year, last 10 12 years I was working on one technology, and nowadays I'm working on any other technology, or I mean you can tell that I'm working on cloud computing. सो आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा, एंड इंडस्ट्री को भी पता है। एंड आई रिमेम्बर इन 2010 व्हेन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च द जो क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट टाइम भी होता था कि कंपनी से कॉल आता था कि आई एम लुकिंग फॉर द क्लाउड प्रोफेशनल हुआ वर्किंग, आई मीन क्लाउड एक्सपीरियंस 4 ईयर। क्लाउड 2010 में लॉन्च हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, एंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था क्लाउड में, तो क्या बोलोगे? तो ठीक है।
So you have to tell them if you are the working professional, so you can tell them that you are working since last 2 year or 3 year. 3 year tak easily you can justify the way we are covering the region. Our model is totally practical based model. So 90% time I'm putting my effort in implementation, remaining time practical implementation, architecture designing, use case study, interview preparation, and other activities. So you'll be in a situation where you can prove that you are working since last few year. इवन तृप्ति के साथ में तो लोग काम कर रहे हैं सिंस लास्ट 15 ईयर 20 ईयर एंड तृप्ति इज मच बेटर देन देम तृप्ति सर एक राइट क्वेश्चन था। या चेतन सर जैसे इंटर्नशिप हो गई है तो अब तो जितना मेरा ये होगा तो गैप आ जाएगा, तो मुझे कहीं तब तक मैं ज्वाइन करूं या फिर वो गैप से कुछ होगा जब मैं, क्योंकि दैट 6 महीने का ये कोर्स होगा उसके बाद। See, I tell you no. So I tell you one thing. So if you're working somewhere, very good, continue रखो. If you're not working somewhere, तो not कहीं भी ज्वाइन कर लो. एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, गैप नहीं रहना चाहिए. अगर नहीं गैप है, इन दैट केस कुछ डिंग डोंग करना पड़ता है. डिंग डोंग मतलब कुछ अपनी तरफ से आपको पेपर वगैरह बना के लगाने पड़ेंगे. अदरवाइज देयर टू ऑप्शन अवेलेबल. कुछ भी मत करो, बैठ जाओ. अदर ऑप्शन ही कुछ पेपर लगाओ एंड अपनी तरफ से करके कर लो. देयर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. So, So hi Aradhi sir, this is Raja. I joined first time this hi, podcast. Raja Sharma. Raja, you are from which location? I am Delhi? from Delhi NCR location. Okay, Raja. Yes. Okay, so my first question is for my cousin. He is pursuing the BCA. Okay. So he can join this course and what will be his future after joining this course? So I And who tell will you, help to join this? same Yeah. case study. I think Chetan, you are from BCA, right? यस सर। Okay. So I tell you one thing. So first, BCA के अंदर, BCA या BTech के अंदर क्या सिखाया जाता है आपको? Nothing. Question zero. जीरो. ऑन द बेसिस ऑफ बीटेक कोई कंपनी किसी को जॉब नहीं देती. इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी देन Mm-hmm. वहां पे आपको सिखाया जाता है एंड यू आर बिगिनिंग से आप ऐसे यू आर बेस्ट सिंस बिगिनिंग दैट्स व्हाई यू आर एन आईआईटी. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर नॉर्मल टाइप ऑफ कॉलेजेस, so कॉलेजेस में जो फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो भी आईटी में उनको जॉब नहीं मिली. दैट्स व्हाई दे आर टीचिंग देयर 50,000 60,000 40,000 20,000 they Yes. are earning. So why they are getting 20,000 60,000 70,000 or 80,000 only? The reason they are not up to that level. तो जो आपके गुरु होंगे जब वही किसी लायक नहीं होंगे तो आपके चेले कैसे लायक हो जाएंगे. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आईआईटी, Right. वहां पे जो पढ़ाने वाले हैं उनके गुरु हैं वो भी दे आर वेरी मच क्वालिफाइड एंड उनके चेले भी उसी टाइप से हैं. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों दोनों ग्रूम्ड हो रहे हैं, दोनों स्किल्ड हैं. तो Right. नॉर्मल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज एमसीए या बीसीए कोई भी कोर्सेज हैं तो कॉलेज दे नाउ डेज कॉलेजेस आर गिविंग जस्ट रोड मैप आपको दे रहे हैं. द बेसिक नॉलेज They ऑन are द giving बेसिस only the ऑफ degree, nothing else. करेक्ट जस्ट डिग्री आपको दे रहे हैं. सो नाउ आफ्टर इट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन रोड मैप. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक चेतन कॉल मी यस्टरडे. आई सेड ओके डू वन थिंग. आप काम करो कि जस्ट गो फॉर द क्लाउड प्रोग्राम. इसके बाद में डेटा प्रोग्राम को पकड़ो. क्लाउड के अंदर क्लाउड इज जस्ट लाइक दर ग्रेजुएशन, इट विल टेक 3 मंथ. इसके बाद में व्हाट यू कैन डू जस्ट जस्ट ट्राई फॉर द डेटा वन. टोटल आपको लगेगा 6 मंथ कोर्स कंप्लीट होने में एंड इन बिटवीन यू कैन ट्राई 9 मंथ के अंदर देर बी 90% चांसेस दैट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी. नाउ क्वेश्चन इज सैलरी कितना चाहिए आपको. सैलरी के लिए देर टू थिंग. वन इज आप वट इफ यू आर गेटिंग ऑलरेडी गेटिंग गुड सैलरी देन वेरी गुड. नहीं तो आपको नंबर में थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे. सेम कंपनी रखो. इफ यू आर फ्रेशर इफ यू आर नॉट वर्किंग समवेयर तो अपनी तरफ से कुछ पेपर आपको बनाने पड़ेंगे. इफ यू कैन नॉट डू इट देन आई टेल यू हाउ टू डू इट. No, he's a fresher and still in pursuing the BCSC. I think he's in third year of student. थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर में there'll be 90% चांस दैट ही विल नॉट बी सेलेक्टेड फ्रॉम कॉलेज समवेयर. कॉलेज का Hmm. प्लेसमेंट नहीं होगा. Yeah, राइट. right. कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा देन ही हैज टू वर्क समवेयर इन 15,000 रुपीज 10,000 रुपीज या फ्री में काम करना होगा या 20,000 रुपीज. No, रीजन no, correct, ऑन द correct. बेसिस ऑफ नॉलेज वट एवर द नॉलेज ही गेन फ्रॉम द कॉलेज नो वन इज गोइंग टू गिव द अपॉर्चुनिटी. और अपॉर्चुनिटी मिल गई देन पीपल विल मिस यूज. ठीक But है. once he after join your course, then he will complete the course in 3 months, 6 months, and 9 months. It is a multiple course. मध्यस्थी देयर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल. सो सबसे पहले सो यूजुअली व्हाट आई रिकमेंड मैं बोलता हूँ कि पहले आप मुझे कॉल करो. आप कॉल करो. आई टेल यू आई चेक कि आप किधर आपका नॉलेज है, किधर Mm-hmm. आपका इंटरेस्ट है या किस चीज से है. देन Right. अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट फॉर द कोर्सेज.
ठीक है, इस चीज को सजेस्ट करने के बाद एंड बी इन अ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल ही बोला, रजत को बोला कि चेतन को, कि डू वन थिंग, इफ यू, आई मीन ही इज ऑल्सो, ही जस्ट कंप्लीटेड बीसीए। मैंने बोला कि काम करो, इट वुड बी बेटर if you are going to start, you are going to be part of my new batches, but it will be better if you can join with your friends जो आपकी तरह ही हों। उसमें क्या होगा कि आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा, वेयर यू विल डिस्कस ऑफलाइन, आप डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एक इको सिस्टम बना लोगे। इवन इफ यू गोइंग फॉर द अपॉर्चुनिटी समवेयर, क्या क्वेश्चन पूछा गया, यू विल राइट द क्वेश्चन एंड यू विल शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। But after complete the course, he's still the fresher. So company will take hire it or not? Because as सो of now, there is no fresher hiring in the इन market. नो नो, सब कुछ है मार्केट के अंदर, सब कुछ है। तो उसको Mhm. क्या करना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले स्किल, अपना स्किल चेंज करना होगा, उसको दिखाना होगा कि आई एम क्लाउड ट्रेंड। Okay. ही इज फ्रेशर, उसको क्लाउड Mhm. ट्रेंड बताना होगा, आई एम क्लाउड ट्रेंड। इवन ड्यूरिंग द कैंपस, अगर कोई बंदा बोलता है क्योंकि आई एम क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड ट्रेंड है, सो Mhm. ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो द चांसेस विल बी वेरी हाई कि वो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। इवन Right. कॉलेज के अंदर, जैसे पहले मैं कॉलेज के अंदर जाया करता था, नोएडा कॉलेज के अंदर। तो नोएडा Mhm. कॉलेज के अंदर पहले स्टार्टिंग में क्या था, टीचर्स को भी नहीं आता था। अब टीचर्स Right. सीख लिया है, तो जब मैं जाया करता था तो मैं क्लाउड ही पढ़ाता था। इससे क्या होता Mhm. था, सक्सेस रेट काफी ज्यादा, कैंपस जब होता था कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाया करता था। अभी क्या है कि ढेर सारे कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा के ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के जो कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, वो सब मेरे से ट्रेंड हैं। नाउ डेज Okay. दे आर प्रोवाइडिंग तो आप भी दिल्ली ट्रेनिंग। एनसीआर से यूपी से हैं क्या आप? या आई एम फ्रॉम नोएडा लोकेशन। नोएडा लोकेशन, बेसिकली हाँ फ्रॉम तो नोएडा. Yeah, so but why I'm telling कि your brother is fresher, he's completely fresher, तो डिग्री तो नहीं चेंज कर सकता, but he can claim that I'm working, I'm cloud trained। उस केस में Mhm. क्या होगा, he may get limited number of calls, but उसको मिलेगा। In case he want to get the opportunity very quickly, in that case उसको ये कोर्स करने के बाद बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर होता है तो Okay. बैंगलोर के अंदर चांसेस विल बी वेरी हाई कि जल्दी जॉब मिल जाएगी। But in इधर Bangalore, I think if he get 5 to 6 lakh rupees, 3 lakh rupees will already in तो कोई बात नहीं, before चेंज the कर I लेगा think house आफ्टर rent सम and टाइम। सी, everything. once he will join and after some month, few month he can change it। बिगनिंग के लिए जरूरी नहीं होता कि सिंस डे वन यू विल सेव। सिंस डे वन उसने कुछ कमाया भी तो नहीं है। अगर ही वट एवर अमाउंट ही इज गेटिंग, आपको सपोज हम कहीं 5 लाख पे भी होता है, तो ठीक है, खर्च कर लेगा, मत सेव करे 6 मंथ तक या 1 ईयर के बाद। एटलीस्ट स्ट्रगल करने से बेटर है तो स्टार्ट कर ले। आफ्टर 1 मंथ, 1 ईयर ही कैन डू समथिंग। तो देयर बी टू चांस, देयर बी टू, either he will get opportunity from the college, उसके लिए भी cloud is mandatory। if he is not getting opportunity for cloud, I mean in college और campus नहीं आई कंपनियां, in that case also he can try outside and he will get call। हो सकता है 6 मंथ ले ले और जॉब लेने में, ठीक है, उस टाइम पे कर सकता है, या I'm working since last 6 month in cloud। तो ये चांसेस दो जीरो, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं, देयर नो चांस। ही हैज टू टेल दैट यस आई एम क्लाउड ट्रेंड। इवन इन 2022 मुझे बोला गया कि वी नीड 25 फ्रेशर, मैं एक फ्रेशर नहीं ला पाया। द रीजन, उस टाइम मार्केट अल्टीमेट लेवल पे था, फ्रेशर्स भी नहीं मिल रहे थे। आज के टाइम पे आपको 100 फ्रेशर चाहिए तो 200 मिल जाएंगे, आपको 100 चाहिए तो भी 100 मिल जाएंगे। बट 2022 में मिलना बहुत टफ हो गया था, कोविड के ड्यूरेशन में। So, guys, we have another case study. Is Shubham Verma. Shubham, are you there? Yes, sir, I'm here. So, guys, Shubham and Gaurav दोनों भाई हैं। इन दोनों की आवाज भी एक जैसा लगेगा। तो शुभम इज द पर्सन, व्हाट हैपेंड, ही वाज वर्किंग साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से कहीं से कम्युनिकेशन में मेरे साथ में आया, एंड व्हाट हैपेंड, ही मूव्ड इन क्लाउड। No, he moved in cloud. He's working since last 1.5 or 2 year. He is the part of cloud industry. So, आपने कैसे किया शुभम? एंड शुभम को ही देख के उसके ब्रदर गौरव ने स्टार्ट किया था। Okay, so thank you, sir. Thank you, Aradhya sir, for this session, and it's been an honor for me to describe how I started my cloud computing journey. So, let me speak in Hindi so more audience can understand my words and they can co-relate after that. So, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2021 जनवरी में। तो मैं सर के पास को जानता नहीं था, तो लेकिन मेरे मेरे मन में था कि कुछ नया सीखते हैं।
ठीक है, तो इस चीज के लिए तो मेरे को क्या हुआ, एक व्हाट्सएप ग्रुप का कनेक्शन था जिसमें आराध्य सर एडमिन थे। तो मैं इवनिंग के टाइम बैठा हुआ था, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि एक कोई बंदे से पता लगा कि इस ग्रुप के एडमिन आराध्य सर हैं, वो कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स चलाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी एनरोल कर लेता हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम कुछ नया सीखने का मन इसलिए भी था क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में मेरे को काफी कुछ आता भी है और कुछ मैं आगे भी करने वाला था। लेकिन मेरे को पता लगा कि उसका जो बेस है हर एक चीज का, इट्स क्लाउड। अगर आप कुछ भी पावर बीआई सीखते हो या कुछ भी आप करते हो तो उसका बैकग्राउंड में क्लाउड ही है जो उसको आगे बढ़ाता है। तो जब मेरे को पता लगा अतुल सर के बारे में, तो मैं अतुल सर से क्लास लेनी मैंने स्टार्ट कर दी। तो जब मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया, सो देर वॉज समथिंग विच आई वॉज टोटली न्यू, कि मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। ना तो मेरे को किसी ने उसके बारे में कभी बताया था, ना ही मैंने कभी किसी अपने दोस्त के थ्रू वो बात समझी थी। तो आराध्य सर ने मेरे को एक मेंटरशिप भी दी और एक ऐसा पाथ दिया जो मेरे को एक सही रास्ते पे लेके गया, क्योंकि अगर आप रास्ता ही चूज नहीं करोगे तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक कहावत भी है कि आपको अगर कहीं नहीं जाना तो आप कोई सा भी रास्ता ले सकते हो, लेकिन आपको कहीं जाना है तो उसका एक रास्ता होता है। तो मैं जब सब आराध्य सर से मिला, उनके हर एक सेशन में मेरा ऐसा था कि मैं हर मंथली सर से मिलता था। मंथली इसलिए मिलता था कि सर मेरे को आपकी बात अच्छी लगी है, मेरे को सर से बात करना अच्छा लगता था। सर से रोज में मतलब ऑन अ डे में कम से कम 5 से 10 कॉल करता था ऑन एन एवरेज, कि सर क्या हाल है, कैसे आप क्या कर रहे हैं, मेरे को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं जब स्टार्टिंग की 2021 में, तो पहला जो बैच था उसमें तृप्ति की रिलेटिव था विकास, वो मेरे साथ ही टीम मेंबर था। तो मैं उस टाइम अच्छा कर रहा था कोर्स में, तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछता था कि मैं कहीं फंस रहा हूँ, कि मैं कैसे उस चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरा इंटरेक्शन उस चीज से बढ़ा, काफी आगे बढ़ा। तो धीरे 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 तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज में मास्टरी क्यों ना की जाए और इसमें पंचुअलिटी क्यों ना लाई जाए। तो मैं 100% पंचुअलिटी इसलिए रखता था क्लास में ताकि मैं एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना करूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को पता था कि कंपनी में जहां भी मेरा होगा उसमें से लेट्स एग्जांपल 2 से 3% भी सर्विस यूज नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे पास अभी करंटली 10+ ईयर एक्सपीरियंस है आईटी में ही। ठीक है, लेकिन कुछ गलत डिसीजन की वजह से, कुछ मेंटरशिप ना मिलने की वजह से मेरे प्रोफेशनल लाइफ को हार्म हुआ है। लेकिन जब से मैं आराध्य सर से मिला हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो मैं गलत कर रहा हूँ ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही, तो फिर क्या हुआ, जब मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिली क्लाउड में ही, जब मैं घर पे था तो वो टोटली रिमोट पोजीशन थी। ठीक है, तो मेरा भाई किससे काफी इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर सैलरी, इट हैंड ऑन सैलरी, कैश कितना आता है वो फर्क, बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। आपको मैं मूवी दिखाऊं या आप कहीं घूम लेने जाऊं तो आपको वो चीज अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं आपको कैश में बताऊं वो चीज और आपके सामने विजुअलाइज करके दिखाऊं तो आप उससे ज्यादा वो होते हो, मतलब यू गेट वेरी मच अफेक्टेड आफ्टर, अफेक्ट होते हो उससे। तो जब मैं घर पे था तो मेरे भाई ने सोचा कि वाई नॉट, मैं क्यों ना अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मुझसे भी अच्छा कर सकता है। इसको, ही इज वेरी गुड कम्युनिकेटर, ही हैज अ वेरी गुड प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, ओके हियर, एंड ही कैन टॉक टू मैनी अदर पीपल आल्सो, क्योंकि मैं थोड़ा हूँ इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मेरे साथ बहुत कम ऐसे हैं, मतलब कम्युनिकेशन में बहुत ही कम रखता हूँ। ठीक है, लेकिन जब इसने देखा कि ये भी कर सकता है तो इसने भी, मैंने इसको बोला कि तू एक बार ज्वाइन कर ले, लेट्स सी कि व्हाट इज इन योर पाथ, व्हाट इज इन योर किस्मत, जो भी होगा दैट यू विल गेट इट। ओके, तो हम लोग जब भी जाते थे मंथली टू मंथली, तो मैं अपने भाई को लेके जाता था सर के पास। ठीक है, कि सर इसका हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, भाई को अभी ये केमिस्ट्री से कर रहा है। ठीक है, और इसमें अभी इसको कितना टाइम लगेगा। तो हमारी चीज में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस, कि अगर आज आपको लोगों को कोई सेमिनार अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आज रात ही आप लोगों की जॉब लग जाएगी, नहीं। आपका कैरियर पाथ अलग हो सकता है, आपकी सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपका लोगों से बात करने का भी तरीका चेंज हो सकता है। तो आपकी जो जर्नी होगी वो आपके वर्क और आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा कि आपका होगा, होगा और कुछ टाइम बाद होके ही रहेगा। इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा ये चीज। तो हम लोगों ने, मैंने स्पेशली
इस चीज को बहुत आगे तक लेके गया। मैं लोगों से भी कनेक्ट करा था कि अगर आपका कोई स्टूडेंट है या आपका कोई दोस्त है जो सीखना चाहता है, नॉन आईटी बैकग्राउंड में है, तो मेरे जो कम्युनिकेशन है मैंने वहां भी बात की है कि सर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो कर सकते हैं अच्छा, अगर आपके पास बैंडविड्थ है या नहीं। तो मेरे रिलेटिव में जितने भी बंदे थे वो भी इनरोल करना चाहते थे इस सर के कोर्स के बारे में, तो हमने इस कोर्स के बारे में बताया। हमने उनको बताया कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 3 महीने एग्जैक्ट, क्योंकि 3 महीने में क्या होता है कि फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग टू ऑटोमेशन टू इंफ्रा पार्ट सब कुछ उस कोर्स के अंदर ऐसे बना हुआ है कि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेरी जर्नी यही थी। मैं पहले साइबर सिक्योरिटी डोमेन में था है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी डोमेन के बाद मेरे को कोई मेंटर नहीं मिल पा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे प्रोफेशनल करियर में यही थी कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, और उसको कर लूँ तो उसको मेंटेन कैसे करूँ उस चीज को। तो फिर मैं सर के पास गया, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखा। अब ये है कि आई नो पीपल, आई नो कि वो कहाँ फंस रहे हैं और उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सर की वजह से हम मैं तो स्पेशली यहाँ पे हूँ। जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं सर के रेफरेंस से ही कर रहे हैं, और सर के ही गाइडेंस से ही हम लोग उस चीज को अगर फोकस कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहूंगा कि आप कोई सी बैकग्राउंड से हो, आप अपने जो इफ एंड बट है उसको साइड रख के सर की बातों को समझें, सर की बात को नोट डाउन करें। क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं चीजों को सुनता कम हूँ, अगर मैं लिखूंगा उस चीज को तो शायद मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो जैसे कि जो भी बंदे इस ग्रुप में हैं जुड़े हुए हैं, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका सक्सेस होगा होगा और होके ही रहेगा अगर वो सर की बातों को समझेंगे, लिखेंगे और इस चीज को इम्प्लीमेंट तो करेंगे। सो गाइस, ही यू नो शुभम के अपने कुछ चैलेंजेस हैं। सो सिंस बिगिनिंग ही हैज सम चैलेंज। तो उसमें क्या होता है कि आई मीन ही आल्सो नो कि ही हैज सम चैलेंज, उसको एक्सेप्ट करता है। गुड पार्ट इज और बेस्ट पार्ट इज ही एक्सेप्ट इट कि यस आई हैव सम चैलेंज। एंड बिकॉज उस अपने चैलेंज को उसने एक साइड में रखा, एंड ही इज पुटिंग द एफर्ट, एंड ही वाज इनरोल फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर अ बैच, फॉर एंटायर ईयर के लिए इनरोल था। एंड उसकी सक्सेस जर्नी को देखे उसके ब्रदर ने स्टार्ट किया। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द तृप्ति, तृप्ति को रेफरेंस कहाँ से मिला था? तृप्ति आपके ब्रदर इन लॉ ने दिया था, राइट? ब्रदर इन लॉ, हाँ ब्रदर इन इनके लॉ। ब्रदर इन लॉ ने दिया था। फिर से इनके ब्रदर इन लॉ ने एक और लड़के को भेजा था, उसका नाम शायद शुभम था, शुभम जोशी। शुभम बिस्ट। शुभम बिस्ट, करेक्ट, शुभम बिस्ट। हम्म। एंड फिर आपके ब्रदर इन लॉ के ही रेफरेंस आई थिंक हु इज हियर इन दिस गाय, चेतन, राइट? यस सर। So he's also, so these are the some of the case story use cases where people were not from the IT background या IT में थे, they were struggling या बहुत experience हो गया, salary was very less। अभी मैं बोलूँ मतलब एटलीस्ट इंडिया के अंदर सो फार आई हैव ट्रेन मोर देन 22 और 2300 कैंडिडेट्स सिंस लास्ट 11 ईयर। इंडिया के अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिमम बट मैक्सिमम की मैं बातें करूंगा। तो मैक्सिमम मेरा कैंडिडेट है हु इज फ्रॉम, वन इज फ्रॉम पुणे लोकेशन, अनदर इज फ्रॉम गाजियाबाद लोकेशन। इन दोनों की सैलरी 1 CR के ऊपर है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 1 CR मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन। बट क्लाउड के अंदर गेटिंग अपॉर्चुनिटी समवेयर बिटवीन 30 to 60 lakhs इज इजी। 40 lakhs के ऊपर थोड़ा सा टफ होने लगता है, बट इट्स मैनेजेबल if your knowledge is diversified, if you're groomed, if you're skilled, if you're punctual, if you're dedicated, if you're practically implementing and discussing with me, then yes, मिलना ही मिलना है। So there's a question from Shardul ki he's saying he is from mechanical engineering background and he's from non-IT background and don't have the PF history. So PF history is not required. तो तृप्ति के केस में सी वॉज नॉट गेटिंग पीएफ, बैंक में है बट बैंक के अंदर तृप्ति आप लोगों को क्या मिलता एनपीएस। है? एनपीएस मिलता है। एनपीएस। पॉइंट नंबर वन, तो नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड इज गौरव, गौरव के केस में गौरव ने बोला कि आई एम वर्किंग स्टार्टअप कंपनी। वी वर टेलिंग दैट सिंस लास्ट 2 ईयर आई एम वर्किंग स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी के अंदर पीएफ मैंडेटरी नहीं होता। सो गाइस, if there's no PF history available, so you don't worry, just claim that I'm working in startup. Okay, so it's not required. If anyone is claiming that आपका पीएफ को मैनेज कर देगा, डिलीट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, सब फर्जी है। स्पेशली द आई नो लॉट्स ऑफ पीपल वो फ्रॉम हैदराबाद एंड बैंगलोर, दे आर चार्जिंग अ लॉट। वो आपको फेक डॉक्यूमेंट देंगे, फेक बोलेंगे सब पीएफ हिस्ट्री चेंज हो गई, सब फर्जी है। दे विल चार्ज अ लॉट, लाखों रुपए आपसे ले लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते। दे आर नॉट टू स्मार्ट, इतने स्मार्ट नहीं है कि गवर्नमेंट के डेटा को मैनिपुलेट कर देंगे। दे कांट डू एनीथिंग। तो इट वुड बी बेटर
to tell them, if you don't have the PF history, tell them that my company is not giving PF, or maybe NPS है हमारे यहाँ पे, और second option, if anyone who is getting NPS या NPS आपका है या आप जो भी है तो आप वो कर दो. Otherwise, what you can do, you can tell them that I'm working in a startup company. Startup के अंदर, as per the rule, as per the government of India, if any company is startup and company size is less than 10 or 20, then PF is not mandatory. ठीक है. Shobit was about to join but he has some internet connectivity issue, who he couldn't join. तो उसने भी ऐसा ही किया. तो उसने बोला था कि I'm working in a startup और मुझे PF नहीं मिलता. सेम सिचुएशन गौरव के साथ में. गौरव ही ऑल्सो एक्सप्लेन कि नो, आई एम नॉट गेटिंग Yes, sir. नॉट गेटिंग PF. नो प्रॉब्लम. PF हिस्ट्री चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. बोल दो नहीं मिलता, आपके लिए एक न्यू यूएन नंबर खोल के देंगे वो. बट आपको बोलना पड़ेगा यू आर वर्किंग स्टार्टअप, अदरवाइज दे विल आस्क फॉर द PF डिटेल. Okay, any other question? So guys, any other question? Raja Sharma, Sachin, Sandy, Chetan, Kamala. Kamala, you're from Chennai? Kamala, Himanshu Singh, Vishnu, Ashish, Animesh Srivastav. Anyone, any question, guys? If you have, you can unmute and ask the question. We have 5 more minutes left. So if you have any question, okay, one more thing. Here in the chat window, I just shared a group. I just shared a WhatsApp group. I'll suggest all of you to join this group. Sir, I have a question, sir. Can we do the both courses in parallel? Yeah, you can. If you can manage, then you can do it. So what happened? I'm running my batches during the weekend. So, earlier, like 10 years ago, I was running 3 batch, morning, afternoon, and evening. But since last 4 to 5 years, now I'm running only 2 batches. So if you can manage, you can do it. For example, in case Shubham was enrolled for 1 year. So he was the part of all batches. Morning में भी होता था, evening में भी होता था. If I'm talking about the Tripti, तो Tripti के case में initially she was the part of evening batch, but because of the personal and professional reasons, he was unable to attend. नहीं, morning I think. I think it was morning batch. She was unable. एक सैटरडे को ज्वाइन करती थी, नेक्स्ट को नहीं कर पाती थी. So what Because second or fourth Saturday off होता था बैंक पे. So what she did, she was the part of, वो रिकॉर्डिंग के ऊपर जाती थी एंड उसके बाद इवनिंग बैच जैसे स्टार्ट हुआ तो इवनिंग में उन्होंने जाके कंप्लीट किया. इट मींस शी वाज द पार्ट ऑफ मॉर्निंग बैच, बट एज शी वाज अनेबल टू मैनेज, तो आई सेड ओके, डू वन थिंग, जस्ट बी द पार्ट ऑफ मॉर्निंग बैच. एक बार आप यहाँ अटेंड करो, व्हेनेवर यू फील यू हैव टाइम आप इसको करो, अदरवाइज रिलाई ऑन द वीडियो. Whenever my batch will start during the evening, आप उसके part हो जाओ. So she was the part of morning as well as the evening batch. So it's totally up to you. If you feel you are able to manage, you can. So यस सर, क्योंकि मेरा थोड़े पहले से फिनिश हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर दोनों, मैं अभी घर में ही हूँ तो दोनों चीज एक साथ लेके चल दूंगा तो you can, yeah, you भी can, मिल you जाएगा. can, yeah, you can. So technically, it is ओके सर. feasible. Yeah. So one suggestion to all of you, everyone, please join the group here in the chat window. In last is, so first is my number, 9999777896. I'll suggest all of you to save my number, and the second is the group. So I'll suggest all of you to join this group also. So सर Sachin, चैट में नंबर डाल दो सर अपना. डाल दिया मैंने चैट के अंदर, नंबर भी डाल दिया एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी डाल दिया. विजिबल क्यों नहीं हो रहा सर? One second, let me, okay, waiting. सर विजिबल नहीं है सर. Okay, let me change it. Okay, everyone, waiting for everyone meeting. Okay. सर कोर्स की डिटेल्स, ड्यूरेशन वो Okay, सब हाँ, आप बाद में बताओगे? मतलब अभी तो नहीं नॉट बताता. एजेंडा है इस सेशन Okay. के बाद में. Yeah, so I'm going to share my screen. So everyone, just join the group. Here in the WhatsApp group I have shared in the chat window. In the meantime, I'm sharing my screen. Please confirm, everyone, please confirm once it is visible to all of you. विजिबल सर. Visible. Okay. Okay, guys. So first, I just told you in beginning, guys,
So first, this course is sponsored by Center of Excellence. Now, question is, what is Center of Excellence? Center of Excellence is one of the online community, educational community, hosted by or executed since a long time by Arun. Arun is one of the US citizen. He is native Indian, but he is from US. And if I'm talking about this course is called the Master Program. Master Program means here you will get opportunity to learn the automation, you will get opportunity to learn administration, development, architecture, everything. Earlier, I was running three different courses, one for the develop, second for the architecting, third for the administration. But based on the my communication with Arun, what we decided to consider everything as a package in the same course. So now what we are doing, we are running one course which is called the Azure Master Program. This course is also called the Triple Fusion Program. Why Triple Fusion means in the same course you will get opportunity to learn administration, development, as well as the architecting. That's why the same course is also called the Triple Fusion or Architecting Program. So master program is also called the triple fusion or architecting program, where you'll get opportunity to learn multiple technologies. So first here is the first, it's a live session. It's a live session Saturday and Sunday, 3 hours in a day. And the second is I'll be available Saturday, Sunday. I'm very much occupied. Hence, Monday to Friday, I'll be available. If you have any question, you can directly call me and clear your doubts. Second, it will be 90% time, it will be practically implemented. Means I'll implement each and everything practically in the live session. Plus, there'll be two mock-up session. Means when I'll go for the opportunity, whatever the different type of question people will ask and how to respond, ये सब चीजें mock-up session के अंदर होंगी. इस CV कैसे prepare करें, कैसे इंटरव्यू का response कैसे करना, all these things will be in the same session. And again is I'll share before completion of the course, I'll share the examination done. So in case you're planning to write the exam ke question I'll share, and it will be very much helpful for you guys. LinkedIn and resume preparation ke liye series running lots of webinars where you will get opportunity to renovate your CV. अपने रिव्यू करवाना चाहते हो लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे अपग्रेड करें, सो इसके सीवी की तरफ से अरुण इज रनिंग लॉट्स ऑफ वेबिनार्स ऑन दिस. Plus real-time assignment. Real-time, first I'll implement each and everything in the live session. Plus I'll give assignment. After every Sunday, I'll save the assignment. Multiple assignment milenge, which you have to complete in next 7 days. So it's assignment, totally assignment-based program, practical and assignment program-based program. Plus whatever the session will be delivered, for all these sessions, I'll give the recording also. Here I have mentioned 1 year video access, but actually it's a 5 year. Whatever the video will be available, आप next 5 के अंदर, if suppose you lost your video, then in that case also you can call me and I'll give the details of the recordings. So you'll get up to 5 year video access of all the session. Plus here guys, as this course is master program, so here you'll get opportunity. We are starting from very beginning. Region, if you're fresher or you're very much experienced, maybe you're the part of industry since last 20 year or fresher. मेरे लिए सभी fresher ही हैं. So what I'll do, I'll start from beginning. So I'll start from very basic ABCD. Then beginning means foundation of cloud. Then there'll be 2 sessions on foundation of cloud, like role rights, access, what is service, what is subscription, what is license, region, zone, peering, and many more. Okay. And after it, storage account. Storage account is one of the multiple. Sir, ये टूल सर्विसेज सब फ्री होती हैं या आप ही अपने स्टूडेंट्स को देते हो, कैसे करते हो? Microsoft is offering a portal. The portal is portal.azure.com. This is the portal. So what happened? This portal is available free of cost for 1 month. You have to use your debit card or credit card. You can use your credit card. Microsoft will give free subscription for a month. And now question, what after it? What after 1 month? So if you have multiple credit card, you can create a multiple subscription which you can use for the long time. Second, usually I suggest everyone to club together. Suppose 3 बंदे एक साथ मिलके, suppose ABC, there are 3 members. मैं बोलता हूँ 3 members मिलके एक subscription बनाओ और तीनों use करो. ठीक है. So what happened? तो तीनों बंदे एक एक अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर 3 मंथ तो ऐसे फ्री यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव योर फैमिली मेंबर्स क्रेडिट कार्ड या आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, और यू कैन अप्लाई फॉर द वर्चुअल क्रेडिट कार्ड वेयर यू हैव टू पे 50 रुपीज. सो जस्ट स्पेंड 50 रुपीज एंड 1 मंथ तक फ्री यूज करो. सो वट एवर द सर्विसेज आर अवेलेबल,
services are free in a free subscription. Microsoft is offering paid and free, both type of subscriptions Microsoft is offering. Free subscription is valid for 1 month, where Microsoft will give you 16 or 17,000 Indian rupees credit. आपके अकाउंट में 16-17,000 रुपीज आ जाएंगे, वही आपको यूज करना है फॉर मंथ. सो 16,000 रुपीज इज मोर देन इनफ फॉर 3 मेंबर्स. मोर देन इनफ फॉर 3 मेंबर. तो 3 लोग मिलके एक सब्सक्रिप्शन को 1 मंथ तक यूज करें. फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम एंड आदिल. आदिल ने क्रिएट किया, राम एंड श्याम भी यूज किए 1 मंथ में. सेकंड मंथ ने राम ने बनाया, रिमेनिंग 2 विल यूज. श्याम ने बनाया, थर्ड मंथ यूज करो. सो यूजिंग दिस टिप यू गाइस कैन यूज फ्री सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट फॉर 1 year. एंड इफ यू आर यूजिंग द वर्चुअल क्रेडिट कार्ड देन लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड में देयर इज अ पेमेंट एप्लीकेबल लाइक 15 रुपीज और 100 रुपीज बैंक्स आर चार्जिंग. कोई कोई बैंक आपको फ्री में देगी, बट यू कैन अप्लाई फॉर द वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एंड गेट द सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट. So here storage account. Storage account में total it will take around 6 to 9 hour. 6 to 9 hour. इसके अंदर total 6 hour. 6 to 9 hour storage account. Storage account is not only storage account, data lake storage account, table storage, queue storage, disk storage, file storage, blob storage, and other type of storages. Here we will cover. Then after it, we will start the virtual machine. Virtual machine ke there'll be, I mean, in this case, we are covering around 30 services, 30 new services. It's not a virtual machine. Here you'll get all the infra services where you'll get opportunity to learn at least minimum 30 services or 30 plus services. So there'll be multiple sessions, means total around 45 to 50 hour course, 50 hour for 40 hour, 40 to 50 hour on infra services. Then after it, are back, intra ID, monitoring, backup and disaster recovery. From here, development services, app service plan, Azure SQL, Azure Function app, Logic app, service bus, API management, automation, Windows PowerShell, Azure PowerShell, DevOps automation. So the other content. Now the thing is, content detail is here. I'll share in the group later on after the session. And apart from it, question is, cloud program is essential. Nowadays, lots of people who are working security, like information security, cyber security. If anyone who is from backup background, anyone who is working as a data engineer, storage platform, identity and access management, anyone who is working as an administrator, already working as an architect or manager. Suppose I'm working as a senior manager or manager. I'm planning to move my career or change my career toward the cloud computing. So I can. Or if anyone who is working system professional, QA professional, data professional, developer, software point, or any other profile. So guys, if anyone who is from all these profile, they also can plan their career towards cloud. Nowadays, cloud is not good to have, it's a must to have. Without cloud, survival for an IT professional will be very difficult. So guys, if anyone who is from all these background, they also can plan their career. If anyone who is fresher, they also can. इसके बाद क्या होता है, after this course, in case you are planning to work as a cloud architect, here salary structure for the architect is very high. So usually a person who is a part of industry since last 8 years, they can plan their career toward the architecting. So but architecting में जाने से पहले सबसे पहले you have to work on other cloud streams. Directly launch नहीं हो सकते आप market के अंदर. If you're already working in cloud computing since a long time, then yeah, directly आप जा सकते हो. So one is the architect. In architect also, we have multiple type of architects required in industry, like cloud architect, solution architect, infrastructure architect, enterprise architect, network architect, storage architect, data architect, cloud engineer, cloud administrator, DevOps role, security, developer, support role, cloud consultant, network role, or a data engineer role. So any type of role you guys can target in cloud. Now, duration of the course is 3 months, Saturday and Sunday, and the fee is 20,000 rupees. For the international students, it's a $250. So what I'll do after the session, I'll share the course content with you guys in the chat window, WhatsApp chat window. Now, again, it's time for the question. If you have any question, you can unmute and ask your question, guys. Abhishek, Sandy, Sachin, Raja, Kamla, Ashish, Animesh, any question from anyone, guys? If no, then we can conclude. Yes, Animesh, please ask your question. फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा स्टूडेंट के लिए? Sorry? फीस स्ट्रक्चर क्या होगा?
Fee structure, okay, I was saying fee structure is 20,000 rupees for Indian candidate. If anyone who is from outside India, it's a $250. Okay, so 20,000 for one course only, cloud. One course, for one course. Okay, and duration is 3 months. Duration is 3 months. It will take around 80 to 90 hours. 80 to 90 hours, On 3 Saturday, hours Sunday. Saturday and 3 hours Sunday. So during this period, I'll implement everything. Sunday, I'll give the assignment which you have to complete in next 7 days. In the meantime, during the weekdays, if you feel you have any question, you want to discuss anything, so you can call me directly. You can call me. If I'm not responding, it means I'm busy somewhere in a meeting. Whenever I'll get free, then I'll call you back. Most important part, you have to be vocal. You have to discuss. If you're not discussing, then I can't understand कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, where you're lacking, where you're struggling. Are you doing good or bad? मुझे नहीं पता चलेगा. For example, आशीष, कमला and Abhishek, मुझे नहीं पता चल रहा है कि whether they are available or not. Cloud engineer, which course you have completed is Azure? So cloud engineers, okay. So this master program, the master program is this is the one of the full package. After this course, what people are doing, people are targeting as per their interest. In case you feel after it, in case you're applying to move toward the data side, in case you feel you're applying to appear as an admin, as a cloud engineer, means cloud software developer. Suppose you are from SharePoint background, maybe you're from .NET, Java, PHP, Python, open source background. And what you're applying to work as a software engineer. Suppose your experience is less, 2 year, 5 year, 7 year, and you already have the technology knowledge, technology experience like .NET, Java, Python, PHP, open source. So, and you're applying to work as a software developer or cloud developer, then you can. If you're more interested toward the data side or you're already working as a data engineer, you're applying to work as an architect. So architect में क्या होता है कि a person who is planning to work as an architect, knowledge should be diversified. Infra, PaaS and SaaS. So here in this case, course, we are covering infra services, PaaS services, as well as the SaaS services, so that people can easily work as a developer, work as an admin, and if required, they can work as an architect. For example, Tripti is the part of industry since last 7 to 8 months only. But I'm claiming here that after 2 to 3 years, he can try try as an architect. The reason she has very good banking domain knowledge, and the way she is working is very different. It's a very different. For architect, it required minimum experience is 8 to 10 years. तब तक 10 year हो चुका रहेगा. And after 2 to 3 years, yes, he can try to apply as an architect. Same situation. Gaurav के case में Gaurav can try for the architect, but after 6 to 7 years only, not immediate. If anyone who is a part of industry since long time, maybe 5 year or 10 year, 15 year, तो immediate try कर सकते हैं. They can immediately try for the cloud architect. If anyone who is totally new, so based on their interest, where you are more interested, you are more interested in coding, you are more interested towards the data side, or low code or no code. Accordingly, you can select your career path. There's some of the area where you'll get opportunity very quickly. There are some areas where opportunity will be very quickly, but salary will be very less. Some other area where opportunity will be higher or lower, but salary will be higher. So it depends on multiple parameter. वो आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी based on your interest. मैं आपको बताऊंगा कि आपको किधर ट्राई करना चाहिए and what is the learning path for you. सर ये पूरा इतने सारे सर्विसेज थी इस कोर्स के अंदर, तो ये सब पूरे 3 मंथ्स में हो जाते हैं या टाइम ज्यादा लगता है? 3 month मीन्स 3 month 90 आवर. आपने जब 12th में आप थे तो आपके मैथ्स के टीचर ने कितने दिन पढ़ाया था? 30 मिनट पढ़ाते थे वीक में 5 days, करेक्ट. एंड वो भी 1 year के अंदर 10 month 9 month ही पढ़ाते थे या 6 month ही पढ़ाते थे. तो मैथ्स जितना आपको टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है. बट वहां पे 30 मिनट पढ़ाते थे, यहाँ पे पूरे हफ्ते के एक ही दिन में, जितना मतलब 5 days में मैथ्स का जो आपका क्लास होता था उसमें 30 मिनट पढ़ाया जाता था मैथ्स, राइट. तो राइट. 5 days में 2.5 hour. यहाँ पे कितना पढ़ाया जा रहा है? मतलब पूरे महीने में जितना पढ़ाया जाता था, हर 1.5 week में उतना पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे. तो हमारी हर डे सैटरडे संडे एवरी डे 3 3 आवर्स की क्लासेस होंगी? यस, 3 3 hour की क्लासेस होंगी. जो टाइमिंग इसका होगा फॉर दिस, द टाइमिंग विल बी वीकेंड, सैटरडे संडे इवनिंग टाइम 7 to 10 PM IST. और मॉर्निंग बैच भी होता है आपका? मॉर्निंग भी होता है बट इट्स ऑलरेडी रनिंग. अच्छा अच्छा, हाँ वही, इवन टू मतलब अपनी प्रोग्राम की फिजिबिलिटी भी देखेंगे ना सर कि अभी सो स्केड्यूल है नहीं है. या सर अगर जिसमें दोनों उसकी उसकी क्या होंगी? चेतन, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. आपने ज्वाइन कर लिया ग्रुप तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन कॉल मी आफ्टर दिस सेशन. यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर.
Hi, Aradhya. Okay. Yes, Ashish, I was waiting for you. Yeah, so Aradhya, I have a one question. So nowadays companies is asking for the certification. So without certification means companies is not providing any job. So Okay. certificate is must nowadays. So So will if you you're from United States, if you're from United States, you're from Europe, then I would suggest you to write the certification. Definitely you should do it. If you're from India location, then I'll not recommend. इंडिया के अंदर सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो फर्जी जिसके जिसके पास भी क्लाउड सर्टिफिकेशन है 90% फेक है, प्रॉक्सी के थ्रू निकाले गए हैं। तो कंपनीज को पता है कि हाउ एग्जैक्टली कैंडिडेट्स आर अरेंजिंग दिस सर्टिफिकेशन। इंडिया के अंदर इफ यू फ्रॉम इंडिया लोकेशन सो नॉट रिक्वायर्ड। अगर कंपनी बोलती है देन यू कैन, इफ नहीं बोलती तो नॉट इट इज नेसेसरी। तृप्ति के but पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, गौरव के पास नहीं है, 900 गौरव के पास है। लेकिन सर इनिशियल स्टेज में वो बोलते हैं कि डू हैव एनी सर्टिफिकेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसको आप अगर बोल। पूछते हैं तो हाँ। यू कैन राइट। इंडिया में सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी। अगर बोलते हैं आपको लगता है यू वांट टू डू इट, तो एक सर्टिफिकेशन कोई निकाल लो, विच इज वेरी इजी। आई गिव द एग्जामिनेशन डंप इन एडवांस, 70 to 80% क्वेश्चन मैच करेंगे एंड यू कैन डू इट। इंडिया के Aradhya, I अंदर think वन मोर थिंग आसिफ, इंडिया के अंदर कंपनी विल चेक योर नॉलेज। अगर आप बोलते हो नो आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, आई हैव नॉलेज, तो ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज दे विल जज यू, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट। You can buy certificate. India के अंदर people are not writing the certification, people are buying the certifications. You can buy 10 certification, but if you don't have the knowledge, you will not get the opportunity. If you have the knowledge, you don't have the certification. For example, I'm the part of cloud industry since last 12 year, 12 ईयर ज़्यादा हो गया, करीब 14 ईयर से, 14 ईयर से। एंड लास्ट 12 ईयर से मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिखे हैं। इनिशियली मैंने लिखे थे बट 12 ईयर के पहले, अब नहीं लिखता मैं। सर इतना वैसे कुछ आपका आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ट्रांजिशन। आप बताते कि आप इट इंडियन में वाज वेरी आर्मी में, इजी। आप मतलब इट एयरफोर्स में वाज पायलट थे ना? It was very easy for me. I tell you one thing, nothing easy। मुझे याद है कि जब मैं नहीं, एयरफोर्स यू वर निकला, यू वर पायलट इफ आई रिमेम्बर इट या करेक्टली, राइट? रुकी पायलट इन इंडियन एयरफोर्स पुणे लोकेशन। रुकी आई टेल पायलट यू वन मतलब थिंग, जब प्लेन? मेरे साथ में हुआ, एक्चुअली में मेरे साथ में कार्डिक मर्मर का इश्यू है। कार्डिक मर्मर ये होता है कि व्हेन यू आर फ्लाइंग, तो स्पीड जो होती है फ्लाइट की 2000 किलोमीटर पर आवर या 2200 2500 चला जाता है। इस केस में हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जब भी आप फ्लाई करते हो तो आपको आपको सूट मिलता है। पायलट जो एक कपड़ा पहनता होगा, आपने देखा होगा। तो वहाँ करेक्ट। पे आपकी हार्ट बीट वगैरह कंट्रोल होती है, बट उसके बाद भी मेरी हार्ट बीट तेज चलती थी, एवरेज देन अदर्स। ऐसा केस एक्सेप्शन होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है। उसमें इट्स नॉट हार्ट से डिजीज कोई नहीं है, बट होता है, हर की बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो आफ्टर सम टाइम ये डिसाइड हुआ कि माय बॉडी इज नॉट फॉर द फिट फॉर द फ्लाइंग। ये कोई हजारों लाखों में से कोई एक केस होता है जो मेडिकल होने के बाद भी ऐसा हो जाता है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि माय बॉडी इज नॉट फिट फॉर द फ्लाइंग। अगर इस केस में फ्लाइंग करता रहूंगा तो हो सकता है कभी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, नॉट कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ सकता है, या हो सकता कार्डिक अरेस्ट भी आ जाए। तो उस केस में ये बोला गया कि ये बहुत एक्सेप्शन केस है, तो बेटर होगा कि आपको इसको क्विट करो। तो मुझे एक रेड सर्टिफिकेट मिला। रेड सर्टिफिकेट के बाद में देन आई रिटर्न बैक इन आईटी। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आई ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज। दैट टाइम देयर वाज एक लैब लेबोरेटरी थी, मैथमेटिकल साइंसेस फाउंडेशन। आई वाज देयर फॉर 1.5 ईयर। उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन मलेशिया। आई वर्कड इन मलेशिया, सिंगापुर। Then I returned back to India, working with a small company, then SCL, Microsoft, uh, then Accenture, E&Y. So my knowledge is diversified. Similarly, my skill set is diversified. Similarly, my company is also diversified. Usually, I prefer to work for a company for 3 to 4 year only, maximum 4 year। अभी तक मैंने काम किया है, 4 year के अंदर मैं जॉब स्विच कर दिया हूँ आज तक, तो ऐसा ही रहा है। तो journey is easy, and when I started my journey in cloud computing it was very easy। The reason is कि उस टाइम मार्केट में कोई था ही नहीं। सो आई वॉज गेटिंग 100% हाइक। हर बार मुझे 100% ही मिला है, 80% से लेके 100% में। मेरी सैलरी बहुत कम थी, 2014 तक बहुत कम थी। उसके बाद मैंने सिर्फ डबल डबल मारा है। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि मैंने जल्दी जल्दी जॉब स्विच किया। द रीजन दैट टाइम आई वाज लुकिंग फॉर द मनी, मुझे पैसे बनाने थे। एंड ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जहाँ मुझे पैसा बन रहा था। दैट्स वाई 2 ईयर, 2.5 ईयर, 3 ईयर में मैंने जॉब स्विच कर लिया, 3 to 4 टाइम्स।
और हर बार मैंने 80% से लेके 100% लिया। सो ओवरऑल मुझे फील होता है कि यस, मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। द रीजन मैंने बताया कि एक बार ऐसा लगता है, कई बार लाइफ में फेल्योर को लगता है कि फेल हो गया, सब कुछ लुट गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फेल्योर आपके साथ में हो सकता है सक्सेस लेके आए। इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग, इफ योर नॉलेज इज डाइवर्सिफाइड, आप उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो यस, थिंग्स विल बी वेरी इजी। आज के 1 ईयर के पहले मैं बोलता तृप्ति से, तृप्ति बोलती कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आज मैं बोलूंगा, तृप्ति हंसते हुए बोलेंगे इट्स वेरी इजी, इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। बट आई रिमेम्बर द डे और द टाइम्स ही वाज ट्राइंग, उस टाइम बोलती थी कि मुझे मेरी मेरी चीजें आसानी से नहीं मिलती। करेक्ट तृप्ति? करेक्ट। आज क्या और मुझे बोलोगे? कोडिंग से, मैंने जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था, मैंने यही बोला था कि मुझे कोडिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे कोडिंग से डर लगता है। तो मैंने बोला था आपको नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद मैंने कोडिंग, मैं ऑटोमेशन से स्टार्ट किया। एंड आज के टाइम हम्म। पे उनको डर लगता था, तृप्ति को डर लगता था, आज उनको डर नहीं लगता। आज वो नो कोड लोग, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। इफ यू वांट टू राइट द कोड और यू डोंट वांट टू राइट द कोड, अकॉर्डिंगली यू शुड सेलेक्ट योर करियर पाथ। We have all the options available. Suppose you're saying, okay, no, I don't want to write the code. Then okay, we have the career path available for these type of professions also. और तृप्ति के केस में मुझे पता था कि सी कैन डू इट, उनको अभी डर लग रहा है। तो मैंने इस तरीके से उनको बोला, मैंने झूठ बोला था उस समय कि आपको नहीं लिखना पड़ेगा, बट उनको लिखना था। सिमिलरली गौरव के केस में, गौरव इज नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, मैंने बोला कि नहीं 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 करना पड़ेगा, आज गौरव लिख रहा है। ठीक है, तो मे बी ऐसा नहीं कि बहुत लिखना पड़ता है, नॉट टू मच, थोड़ा बहुत लिखना पड़ सकता है। अगर आपको वो भी नहीं लिखना है, तो उसके लिए भी रास्ते अवेलेबल हैं। इफ यू डोंट वांट टू राइट इवन सिंगल लाइन ऑफ कोड, ओके, दैट्स पॉसिबल, स्टिल इट्स पॉसिबल गाइस। सो इफ यू आर टेक्नोलॉजी लविंग प्रोफेशनल, और बेकार लगता है टेक्नोलॉजी, स्टिल वी हैव ऑप्शन अवेलेबल। For example, if you are working, suppose if anyone who is from mathematics background, you're not from IT background, mathematics background, so okay, still you can start your career in cloud. आप लोग सोच रहे हो कि why I'm telling, कि एक बंदा आर्ट्स का है, आर्ट्स का बंदा है मैथमेटिक्स से, फॉर देम आई रिकमेंड टू लर्न क्लाउड। उसके अंदर स्पेशलाइज कर लो एएमएल के अंदर, ऐसे अजूर मशीन लर्निंग, वेयर यू नो नीड टू राइट द कोड। वो algorithms वगैरह इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं उनको, विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड दे कैन डू इट। अब पर्सन हुई फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, नॉर्मली वो मैट लैब पे काम किए होते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ जाओ मैट लैब में एल्गोरिथम लिखो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, काम आपका हो गया। एवरेज सैलरी इज 50 लाख रुपीज। बट यू गाइज कैन नॉट ट्राई फॉर सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। रीजन, यू आर नॉट फ्रॉम स्टैट्स बैकग्राउंड। अ पर्सन हु इज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, बट स्टैट्स अगर आपको हो, देन यू कैन ट्राई फॉर क्लाउड डेटा साइंस, क्लाउड साइंटिस्ट, और क्लाउड डेटा साइंटिस्ट आप बोल दो। Even if you want, I can show you right away. Okay, let me show you. I'll show you some example where people were from arts background or science background, and what they're doing now, this उनकी salary देखोगे सरप्राइज हो जाओगे। For example, see my LinkedIn profile, Ankur Tutlani. Ankur Tutlani, he was working with me in Azure Technology Limited, and nowadays, I mean, he's part of Microsoft, and वो BA है, BA from Delhi University in stats, मैथमेटिक्स से अंकुर। तो सर बीए इन स्टेट्स तो अपने आप में काफी अच्छी चीज है, बड़ी चीज है। तो यू सी अच्छी चीज है। तो ये अंकुर टुटलानी है, ये वर्किंग विद मी, वी बोथ वर वर्किंग टुगेदर इन एसआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एंड उस टाइम पे इसको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था इसको। एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट। अभी बैंगलोर लोकेशन में था, बट सिंस लास्ट 1.5 ईयर ही इज इन कनाडा, सिंस लास्ट 8.5 ईयर ही इज इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सिमिलरली सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा, HOUS, Houston. She was with me in Saint Stephen's College, Sonia. Yeah. Genpact में she was with me in Genpact. That time I was the part of Headstrong, the Headstrong के अंदर, and वो मेरे साथ में, हम दोनों लोग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे साथ में ही। So she is also BA. देखो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, कंप्लीट डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA ऑनर्स इन मैथमेटिक्स।
Okay. Another candidate is Manika Agrawal, BA in मैथमेटिक्स देन एमटेक। बीए के बाद एमटेक भी होता है मैथमेटिक्स में, पॉसिबल है। बीए एमटेक एंड सी इज ऑल्सो इन क्लाउड एज ए क्लाउड डेटा साइंटिस्ट। अनदर इज पार्थ सिंह। पार्थ सिंह यूज एकेडमिक एकेडमिक फाउंडेशन तो बहुत सॉलिड है ना सर, इन सब की जो आप दिखा रहे हो। जो आपको दिखा रहा हूँ ये सब आर्ट्स वाले हैं। नहीं नहीं, आर्ट्स है, लेकिन वो सब आप दिखा रहे हो मैथ्स में है या स्टैट्स में है, तो सर That's वो। why I'm telling, that's why I told कि ये डेटा साइंटिस्ट के लिए है। You guys are not ready for the data scientist। आप नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। हाँ वही मैं You- कह रहा हूँ, उनका तो फाउंडेशन ही बहुत सॉलिड डली हुई है सर, वो तो बन ही सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बन सकते। इफ एनीवन हु इज ओके, यू सी है डेटा साइंटिस्ट, इन सभी के अंदर एक कॉमन चीज देखोगे, दे आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड बट दे आर क्लाउड डेटा साइंटिस्ट। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये भी वहां पे मेरे साथ ही था, ठीक है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर। सो व्हाई आई एम टेलिंग, इफ एनीवन हु इज वर्किंग ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग, जरूरी नहीं होता कि आईटी बैकग्राउंड का होना चाहिए। इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन यू कैन ट्राई फॉर द क्लाउड डेटा साइंटिस्ट। And if anyone, and what they are doing, they are writing the code in MATLAB। MATLAB के अंदर करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं क्लाउड की भी, portal.azure.com के अंदर they are just using drag and drop। if anyone who want to write the code then okay, उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। if anyone who want to write the little bit code then data engineering है। in case anyone don't want to write the code then administration है। in case you are experienced, your knowledge is diversified, then you can try for the opportunity as a architect। Salary structure for the architect is somewhere between 30 lakhs to 1 CR। This is very good salary। So why I was telling guys, ये सब academics में क्यों दिखा रहा था, रीजन academics में अच्छे हैं बट दे आर डूइंग गुड, द रीजन इज क्लाउड के अंदर है। अदरवाइज जाके किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे होते हैं यहीं पे 60,000 रुपीज में, 80,000 रुपीज में। अंकुर टुटलानी दिल्ली, दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे पढ़ा हुआ है। आई रिमेंबर 15,000 रुपीज में जॉब करता था। एंड व्हेन ही वाज वर्किंग एशिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कुछ 5 या 6 लाख का पैकेज था, कुछ 5 लाख का शायद, ऐसा कुछ। नाउ ही इज गेटिंग, आई मीन बैंगलोर के अंदर अराउंड 70 lakhs के या 75 लाख का पैकेज था उसका। So the thing is, cloud is not only for the IT professional। If you are non-IT professional, if you are good in mathematics or stats, you can try। If you want to write the code, cloud is for you also। If you don't want to write the code, cloud is for you also। Now, if you have any question, you can unmute and ask the question. Again, I'll suggest all of you to join the group. And if no question, then we can conclude the session। सचिन शर्मा, रजत रजत, सचिन, सैंडी, कमला, अनिमेश, वैभव, रशद, रशद, साकिब, चेतन, all of you please join the group I shared in the chat window। if you have any question you can unmute and ask question। if no then we can conclude here guys। गुड आफ्टरनून सर। good afternoon, Avnish Srivastava from Lucknow। यस सर, लास्ट टाइम आपसे अरुण बात सर हुआ था, यू आर इन हाँ। कॉलेज या स्कूल या कॉलेज के अंदर हो आप? नहीं नहीं सर, मैं कॉलेज में नहीं हूँ। मैं था ना कि मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ अच्छा, आपको सर ने सर पर उस याद है सर अरुण से के साथ बात। कॉल हुई थी या अरुण के साथ बात हुई थी आपका? हाँ अरुण सर, उन्होंने बताया था कि आप नोएडा में हैं अभी, मैं नहीं, गुड़गांव में हूँ अभी। नोएडा नोएडा। जी, मैं भी गुड़गांव में हूँ। और सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरी जॉब जो है वो 10 AM to 6:30 PM है। अ, मतलब मैं और लेट भी अभी ज्वाइन किया मैंने आपका सेशन, तो क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसको ज्वाइन करना? Okay, 10 to 6:30, मंडे टू Monday फ्राइडे। to Friday, Monday to यस, Friday सैटरडे मतलब सेकंड फोर्थ सैटरडे वर्किंग। possible है, possible है। जी। Yes, for you it's possible। और मेरा भी क्या है कि डेटा एनालिटिक्स के जो टूल्स है जैसे पावर BI और SQL है, तो ये भी मतलब हाफ बेक्ड नॉलेज है अभी तो। मतलब इसका इसमें यूज़ है, डायरेक्ट डायरेक्ट सब यूज़ कुछ है। guys, if you're the part of industry maybe 6 month or 6 year या 15 year whatever you have learned, उसका यूज सब कुछ होगा। हो सकता है तुरंत हो, कल हो, बट होगा। नहीं सब मेरा मतलब ये है कि जैसे पावर BI में मुझे क्या एक डिसेंट लेवल पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, पावर उसके बी बाद आई ही मैं पावर इसके। बी आई जस्ट लाइक द लॉलीपॉप। पावर बी आई अच्छा इज ऑलमोस्ट डेड तक, मतलब डेड होने की तरफ जा रहा है, वो आगे चल के डेड हो जाएगा। अच्छा। इवन
गूगल पे आप सर्च करो, पावर बीआई का जो आपका प्रीमियम वर्जन है उसके लिए उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट इसको स्टॉप करने जा रही है. So anyway, but still whatever the knowledge you have maybe in SQL, Power BI और Excel उस सब चीज़ों को आपको यूज करना होगा. फॉर एग्जांपल तृप्ति वाज वर्किंग एज अ बैंक मैनेजर. आज इमीडिएट प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर रहे हैं बट आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ्स ही विल यूज इट. Similarly, if you are good in automation, don't worry. If you are good in automation going forward in future, you have to use it or you can use it if you want. In my case, I'm automating. I'm mainly focusing toward the automation. Beginning, I told you guys, if you can write 100 lines of code, so आपके मैं उस टाइम कोड नहीं लिखूंगा बट आई स्पेंड मे बी इन वन डे यू आर राइटिंग 10-20 लाइन्स ऑफ. मैंने जस्ट मतलब अभी कुछ देर पहले ज्वाइन किया, और क्योंकि मुझे मतलब आप लोग की डिस्कशन अभी क्या हुई मुझे नहीं पता। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जो क्लाउड एज्योर जो है वो एक क्लाउड का एक पार्ट है, मतलब एक आई नहीं, मीन एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। अजूर इज क्लाउड. आप समझ लो, अजूर क्लाउड इज क्लाउड. क्लाउड इज क्लाउड या अजूर इज अ क्लाउड. Power BI is one of the service of Azure. Similarly, यस। SQL is one of the service. Data Factory is one of the service. Databricks is virtual machine, app service plan. These are the services. So cloud is just like the book. इस बुक के अंदर hundreds of chapter हैं. तो जो और आपने पावर बीआई पे आप काम कर रहे हो वो एक चैप्टर है उसका. सपोज मेरी मान लीजिए कि नॉलेज जीरो है, तो मतलब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इसमें। यस यू कैन. जब कॉलेज के फ्रेशर स्टार्ट कर सकते हैं. माई सन इज 8 year old. वो सुनते सुनते उसको भी रटी हुई हैं चीजें. तो क्लाउड के जी। बारे में वो भी बताता रहता है. वो क्लाउड की पोएम सुनाता होगा सर अपनी क्लास में. वो करता है अपना फैन है वो है. वो बताता रहता है, वो बताता रहता है कि क्लाउड में ये हो रहा है, क्लाउड में वो हो रहा है. एंड वेन एवर इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी वो बगल में मेरे बगल में आके चेयर लगा के बैठ के सुन रहा होता है. तो होती ही चीजें होती हैं. ही जस्ट 8 year old. उसको अपने कोर्स का नहीं पता है, मेरे कोर्स का पता है उसको. द थिंग इज, अगर 8 year का बच्चा सुन सुन के इतना लेक्चर दे रहा होता है अपने टीचर को बता के क्लाउड का आ गया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो. क्लाउड इज नॉट फॉर स्पेसिफिक वन. इफ यू आर फ्रॉम बीसेट, बीसीए, बीटेक, एमसीए, आईटी और नॉन आईटी, कोई भी कर सकता है. क्लाउड इज फ्यूचर. क्लाउड इज मैंडेटरी, इट्स नॉट गुड टू हैव, मस्ट टू हैव. विदाउट क्लाउड सर्वाइवल फॉर एनीवन विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज भी आप यूज कर रहे हो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सब क्लाउड सर्विसेज हैं. दीज आर द क्लाउड सर्विसेज. पावर बीआई इज क्लाउड सर्विस. अजूर SQL is the cloud service. So in market we have huge number of services offered by industry. You have to use one, two or multiple. If you can learn multiple services, आपको एडवांटेज मिलेंगी. If you are working on one technology, one service, limited number of opportunity, limited salary है. Okay. Any other question, guys? If you have, then you can unmute and ask the question. If no, then we can conclude the session, guys. Sir, now I am audible. Yes, Chetan, I can. Sir, if I join both the courses, so what will be the timing then? Is मैं there will बताऊंगा, be उसको बताऊंगा क्योंकि soon I'm going to start 2 batches. सर बोथ कोर्सेज मतलब आप 2 कोर्स करा रहे हो क्या अभी? नहीं नहीं, मेरे ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट 2. तो ये क्वेश्चन किसका था, राजा? नहीं, यस. चेतन का ने अभी पूछा ना आपसे. सो मेरे ढेर सारे कोर्सेज होती हैं. ठीक है. तो देखते हैं कि कौन से कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है. नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं. 2 कोर्सेज बैक टू बैक आने वाले हैं. जैसे सर कौन कौन से? बताते हैं वो दैट विल डिस्कस ऑफलाइन. सो ओके. हाँ, उसमें ऑटोमेशन क्लाउड मास्टर प्रोग्राम भी आने वाला है, कुछ डेटा से रिलेटेड भी आने वाली हैं, तो चीज़ें आएंगी. तो सर ये जो अभी डिस्कस किया है क्लाउड मास्टर, इसमें तो ये डेवलपमेंट, डेव, एडमिनिस्ट्रेशन सारी एडमिनिस्ट्रेशन और चीजें हैं ना? आर्किटेक्ट सब कुछ है इसके अंदर. आर्किटेक्ट ये दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम प्रोग्राम. सबसे प्रीमियम प्रोग्राम ये है. 3 मंथ्स का? 3 मंथ का. दिस इज वन कोर्स विच इज फर्स्ट यही स्टार्ट होने वाला है. और 7 to 10 PM, 7 to 10 PM. यस. ओके सर. थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है बट कोई नहीं. इनफैक्ट सैटरडे संडे 7 to 10 PM प्लस माइनस 30 मिनट. मतलब 7 की जगह कई बार लोग बोलते नहीं 8 से स्टार्ट करो, देन हम ओके. तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा. एक और क्वेश्चन था कि सर इट्स नॉट हमें ओनली. दोनों दोनों कोर्स करने कंपलसरी है या एक से भी इट हम डिपेंड्स. नहीं, इट अ, डिपेंड्स. पहले होता क्या है कि जरूरी नहीं होता दोनों. कई लोगों को सिंगल के बाद हो जाता है, कई को दोनों के बाद हो जाता है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कि तृप्ति ने क्या किया था, तो तृप्ति ने दोनों किया था. अगर मैं बोलूँगा कि गौरव ने क्या किया था, शुभम ने क्या किया था, ये सब दोनों कोर्सेज के पार्ट थे.
ओके तो आप होता क्या है ना कि आप अगर कोई बुक आपके पास है, आपने एक चैप्टर पढ़ा और आपने सभी चैप्टर पढ़ लिया, तो दोनों में डिफरेंस होता है। या 50% बुक पढ़ा, 50% नहीं पढ़ा, तो आपका नॉलेज लिमिटेड होगा। तो आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी तो नॉलेज ज़्यादा ग्रो कर जाता है, अपॉर्चुनिटी वहाँ से ज़्यादा मिल जाती है। So usually I tell you ओके one thing, guys. So I'm trainer, but apart from yes, sure, Sachin. So apart from it, whenever I'm getting opportunity to learn something, I'm also getting into and learning it. The reason is it's just like the beauty parlor. So ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, लड़कियां ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हैं? जिससे सुंदर दिखें। सिमिलरली फॉर अ प्रोफेशनल, दिस ट्रेनिंग इज द ब्यूटी पार्लर। थोड़ा पैसा अपने ऊपर खर्च करो, थोड़ा टाइम लगाओ और सुंदर दिखो, सबसे अलग दिखो। देन ओनली यू विल ग्रो, अदरवाइज लोग लूज कर रहे होते हैं हर दिन अपने आप को। ओके, ओके ओके गाइस। सर, सो थैंक यू सर फॉर ओके, नॉलेज। सो इफ यू हैवंट ज्वाइन द ग्रुप, देन ग्रुप इज अवेलेबल इन चैट विंडो, आप उसको ज्वाइन कर लो एंड फर्दर विल डिस्कस ऑफलाइन गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, बाय Okay, एवरीवन। thank you, sir. Bye bye. बाय बाय।